So very good afternoon to all my dear students. How are you all? I hope everything is fine on your side. Had your lunch? Very good. I know that after Sunday's lunch, most of the eyes must be sleepy. But don't worry, my friend. Today's session won't be a boring one. You will enjoy this today's session. This session is very simple session, foundation session, and it is an interesting one. So we are meeting for the first time, correct? So let me introduce you myself. Myself, Mr. Avinash Kadam, a chemistry professor from our Lakshya Institute. Now you will ask me, so what is Lakshya? We know all what is Aarohan, but what is Lakshya? So let me tell you, my dear friends, Lakshya, Aarohan, MT Educare, that is Mahesh Tutorials, and Z-Learn, we are all one family. तो लक्ष्य होने दो, आरोहण होने दो, महेश ट्यूटोरियल होने दो, जीलन होने दो, हम सब एक है. Now, since I told you earlier, I'm a chemistry professor. So today, in this session, we are going to deal a very interesting subject, that is chemistry. And from chemistry, we are going to learn today basic foundation of chemistry, which you will require to build a base for your competitive exam. So in our today's session, we are going to deal with basic foundation of chemistry. Now you ask me, sir, कुछ book pen लेके बैठे क्या? No need to write down anything in my session, my dear friends. सर फिर हम लोग ध्यान में कैसे रखें? इतना सब आप बताएंगे, हमें याद कैसे होगा? Let me tell you one more shortcut, my dear friends. आप क्या करेंगे? After my slide, I'll give you a time to click a photo, or you can take a screenshot from your system. And in the evening, when you're free, you are going to note down all the points of the slides, because my slide is much more informative. So no need to refer any book, my dear friends. So from those pics, you can make your own notes. Chalo, start karte hain fir. Basic foundation of chemistry. You will enjoy this session, trust me. Now let me ask you one question, my dear friend. All of us live in a house, isn't it? Yes. Suppose I'm living in 1 BHK flat. So I'll have 1 bedroom, 1 hall, 1 kitchen, washroom, etc. Balcony वगैरह भी होगा, right? Now, where I'll keep my bed? In kitchen? In washroom? No, I will keep my bed in what? Bedroom, correct. Where I'll keep my sofa set? In hall or in bedroom? But kitchen में sofa set? Not possible. Washroom में sofa set? Not possible. Acha, where I'll that fix my commode? Of course in washroom. ऐसा है क्या कमोड में बेडरूम में? हाँ, बेडरूम के बाजू में अटैच वॉशरूम में डाल सकता हूं. अच्छा, हॉल में कमोड, मतलब गेस्ट आ गया भाई कमोड देख ले, ऐसा तो नहीं है ना. मतलब वी हैव टू प्लेस ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर प्लेस. और ऐसे ही केमिस्ट्री में we have to study all elements which are already placed in modern periodic table. My dear friends, once again I'm repeating, जैसे अपने को फ्लैट में सब अच्छे खासे जगह पे जो भी things required which are very important for our luxurious life, we have kept at their proper places. We have to place elements in a proper position in modern periodic table. अब ये मैंने नहीं रखा एलिमेंट्स को, बहुत सारे साइंटिस्ट आके गए. न्यूलैंड्स, ऑक्टेट रूल वाले भी आके गए, डोबे राइनर, मेंडलीव्स, मोस्लेस, lots of scientists, and ultimately the final decision were taken that all elements from chemistry
should be placed in modern periodic table according to their atomic number. So you can see over here, hydrogen. Atomic number is 1. Let me show you the second element, my dear student. Helium. Now there are some students who don't know what are an element. So elements, it is in modern periodic table. अब अपना पूरे बॉडी में एलिमेंट्स है, अपने को पता ही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इतने सारे एलिमेंट्स अपने बॉडी में है, नॉट पॉसिबल. हड्डी, कैल्शियम है, इधर कैल्शियम, कैल्शियम है, देखना है आपको. सी दिस इज कैल्शियम, कैल्शियम करेक्ट. एटॉमिक नंबर इज 20. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केमिस्ट्री वर्ल्ड. सो वी हैव टू डील विथ all these elements to build our base for a competitive exam and for further college section and further competitive exam. Therefore, I chose this topic for our today's foundation lecture. So this is our modern periodic table. But let me tell you, these are all elements. I have not placed it. ये तो मैंने भी पढ़ा है, जो आप लोग पढ़ रहे हो, साइंटिस्ट लोगों ने काम करके रखा है. और चेक करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है. These are two blank boxes. I hope कि आपको दिख रहा है blank boxes. Atomic number. अभी कुछ बच्चे बोलेंगे what is atomic number? They are placed according to increasing atomic number. सब एलिमेंट को atomic number दिया गया है. जैसे आपको स्कूल में roll number is given. Roll number 1, name of the candidate is this. Roll number 2, name of the candidate is this. Roll number 3, what is the name for that candidate? तो वैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हेलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3. अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन इधर, हेलियम उधर, लिथियम इधर, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? तो ये सब आगे पढ़ेंगे, सब आप भी नहीं बताएंगे हम लोग, एसिडिटी हो जाएगा. अब भी तो लंच किया आपने, बराबर. थोड़ा आगे जाने दो सेशन को, बराबर से समझेगा कि क्यों एक इधर एक उधर, एक को बीच में डाला, एक को नीचे डाला. We will learn all these things in our upcoming lectures. So first you understood that all elements are placed according to their atomic number and these two boxes are blank. अब इसको क्या किया है? Let me tell you. These atomic numbers are from 57 to 71. Means this one box is actually having 15 elements and these 15 elements are placed at the bottom of this periodic table. ये दिख रहा है आपको एरो? लैंथेनम, सेरियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है. एंड दीज आर ऑल लैंथेनॉइड्स. क्या क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो. दीज आर ऑल लैंथेनॉइड्स. अच्छे से लिख के भी दूंगा बाद में मैं, डोंट वरी एट ऑल. अच्छा, नाउ दीज बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस, एक तो मैंने बता दिया. द सेकेंड बॉक्स एटॉमिक नंबर इज फ्रॉम अगेन 89 to 103. And again, these 15 elements are placed below lanthanides. And these are actinides. These are actinides. अब ये bottom में आता है. There are some elements which are at the left. There are some elements which are at the right. There are some elements which are at the bottom of the periodic table. And some are placed in the middle of the periodic table. Correct? अब ये क्यों ऐसी पोजीशन पे रखे? I told you earlier, we'll discuss in upcoming lecture. अब और एक बात बहुत important, most important. Let me tell you, the color represents what? ऐसे नहीं कि मैंने कौन सा भी कलर मार के लाया है. See this color. Where you will find this color? ये दिख रहा है आपको ये कलर? These are all alkali metal. These are all alkali metal. Now these color elements are alkaline earth. These are all alkaline earth and they are metals. They are metals, means has a tendency to lose electrons. Correct? Next, transition metal. These are all transition metal. Basic metal. ये सब basic है. Metalloid. These are all metalloids. ये जो दिख रहा है ना आपको डार्क ग्रीन, these are all metalloids, means having property of metals as well as non-metals. They are all rounder.
मेटालिक कैरेक्टर भी है उनमें और नॉन मेटालिक भी है, मेटलॉइड्स बोलते हैं उनको, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, नॉन मेटल, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स, मींस दे हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे पूछेंगे सो व्हाट इज प्रोटॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन, आ रहा उसके ऊपर में, खाली सुन के ले लो। आज का फाउंडेशन खाली सुनना है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग और अच्छे से तगड़ा कंसेप्ट पढ़ाएंगे। टुडे जस्ट वी वांट टू बिल्ड अवर बेस, फिर हम लोग क्या करेंगे, वो बेस बनने के बाद बड़ा टावर खड़ा करेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक लाके दे देगा। चलो बिलीव मी, आगे हैलोजन, दीज आर ऑल हैलोजेंस, दिस ग्रुप इज नोन एज हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सब हैलोजन है। अब आप बोले सर इतना छोटा लिखा है, दिख भी नहीं रहा है सर, मोबाइल पे बैठा हूं। डोंट वरी एट ऑल, आप खाली स्केलेटन देखो, यू जस्ट ऑब्जर्व द स्केलेटन ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या होता है, एलिमेंट किधर है, कैसे है, बस इतना खाली जान लो, पूरा पिक्चर समझने का जरूरत नहीं है, वो आगे समझाऊंगा ना, डिटेल में पढ़ाई करेंगे फॉर ईच एंड एवरी कलर, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, डोंट वरी। नेक्स्ट, नोबल गैस, these are all noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ये सब noble gases, all are stable, noble gases are stable, noble gases are stable. Next, lanthanide, as I told you earlier, these are all lanthanide elements, correct? And actinide, these are all actinides. Lanthanide started from lanthanum, actinide started from actinum, और ये जो मैंने रो लिखा है ना दो, वो कहां से आया है, ऊपर से आया है। अब इतना 15 एलिमेंट्स एक साथ इधर में डाल के दिखा नहीं सकता हूं, तो पीरियोडिक टेबल में क्या किया है, उसको बॉटम में डाल दिया है, टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके फाइन, वन मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हॉरिजॉन्टल रोज, लेट मी शो यू। हॉरिजॉन्टल रोज, ये जो आपको दिख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल रोज, these are known as periods, these are known as periods. Now can you count there are how many horizontal rows? लिखा है बाजू में, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven periods are there in periodic table, and these are vertical columns, my dear friends. So let me show you, these are vertical columns, and these are known as groups, these are known as groups. अच्छे से सुन लो क्या होने वाला है, मुझे बहुत गंदा आदत है, आई एम हैविंग वन बैड हैबिट, आफ्टर माय ईच एंड एवरी सेशन आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ क्विज, तो मुझे उधर समझेगा कि कौन सा बच्चा करेक्ट आंसर दे रहा है, कौन सा रॉन्ग दे रहा है, और क्यों रॉन्ग दे रहा है, उसको मैं करेक्ट कराऊंगा अभी। And I can observe from the leaderboard who is at the top for today's lecture. वहां पे रैंकिंग भी दिखेगा क्विज में, who is the first ranker, second ranker, third ranker, तो उसमें मजा आता है। Healthy competition should be there, correct? तो अच्छे से सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूं। Horizontal rows are known as periods, and there are total how many periods? 7 periods, my dear friends. And vertical columns are known as groups, vertical columns, these columns are known as groups, and there are how many groups? 18 groups are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 groups are there and 7 periods are there. I hope you understood this much. अब स्लाइड खत्म हो गया, तो आपका काम क्या है, लिखते नहीं बैठना है, मैंने क्या बोला है, यू हैव टू टेक अ पिक ऑफ ईच एंड एवरी स्लाइड, बट यू आर गोइंग टू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक व्हेन इन द इवनिंग, व्हेन यू आर फ्री, और यू कैन राइट इट टुमारो आल्सो इन द मॉर्निंग, फाइन। चलो फटाफट फोटो ले लो, इसको मैं थोड़ा हटा के यहाँ पे साइड में कर देता हूं, यहां पे रख देता हूं, चलो, and you can click a photo or you can take a screenshot from your system
डन, चलो फाइन। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Now we have studied all these elements are placed in periodic table, which is modern periodic table. Modern क्यों? फाइनली आया, फाइनली बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया, फाइनली ये पढ़ने को आ गया जो बुक में आपको पढ़ना है, करेक्ट। नाउ एलिमेंट तो देखा, नाउ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एन एटम। क्या बोलते उसको? एटम। So now we are going to study what is an atom. मैंने बता दिया already. What is an atom? Smallest part of an element is known as an atom. मतलब हर एलिमेंट का एटम होगा ही होगा। हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका छोटा सा पार्ट एटम। जैसे पप्पा मम्मी एलिमेंट, हम बच्चे एटम, उनका ही पार्ट है ना, बराबर। तो एलिमेंट का छोटा पार्ट इज नथिंग बट एन एटम। तो कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? पेपर तो वी आर गोइंग टू राइट इन इंग्लिश। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एन एटम। कैसे होता है देखो, कैसे घूम रहा है देखो, कैसे घूम रहा है देखो। नाउ दीज येलो जो स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस क्लस्टर is nucleus. This cluster is nucleus. So let us understand the definition first. So definition is what? An atom is the smallest unit of an ordinary matter that forms a chemical element, or in a simplified manner you can keep in mind atom is a smallest part of an element. That's it. अब ये क्या घूम रहा है? मैंने बोला था येलो जो घूम रहा है वो दैट इज एन इलेक्ट्रॉन, एंड बीच में क्या बोला था? दैट इज अ क्लस्टर, वो भी लिख के लाया हूं। सो येलो बॉल इज इलेक्ट्रॉन एंड दैट क्लस्टर इज न्यूक्लियस, बट दैट न्यूक्लियस कंटेन, उसके अंदर और पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं उसको। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वन मोर टाइम माय डियर फ्रेंड्स, these yellow colored sphere are electron. In the center of an atom, what is there? Nucleus. And in nucleus, what are present? Proton and neutron. I hope definition of an atom is clear. Smallest part of an element. Nucleus is the center of an atom, and around the nucleus electrons are revolving. घूम रहा है ना ऐसा? Around the nucleus electrons are revolving. घूम रहा है ना? हाँ, ओके। तो ये स्लाइड में क्या है? डेफिनेशन ऑफ एन एटम। एंड एटम रिप्रेजेंट कैसे करता है, हाउ एटम रिप्रेजेंट्स, वो दिखाया है। ले लो इसका भी एक फोटो। डन, चलो। और एटम इतना ही नहीं होता है, अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ना है अपने को। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड पार्ट्स ऑफ एन एटम। वी आर गोइंग टू स्टडी parts of an atom. So parts of an atom. Let me show you the nucleus first. So this is the nucleus. Cluster, जो हमने मैंने बोला था ना, center of an atom is nucleus. Cluster. अब कुछ आपको प्लस दिख रहा है, ग्रीन में सब प्लस दिखा है। अच्छा, रेड जो है कुछ लिखा है प्लस माइनस? कुछ नहीं लिखा है। देखते क्या है, we'll observe. So this is actually a nucleus which contains what? Protons and neutrons, which contains protons and neutrons. मतलब something green is proton or neutron. तो either green में भी proton और red में भी neutron or vice versa. So let me tell you that thing also. Positively charged is known as proton. तो ये जो प्लस प्लस आपको दिख रहा है ना, these are all protons. So protons are positively charged. Where it is located?
in the nucleus. Where the nucleus is located in an atom? In the center. I'm going to ask these MCQs in my quiz after this session. So please ध्यान से सुनो. So protons are positively charged. Now that red balls are what then? Neutrons. And I have not given any charge, means neutrons are chargeless species, matlab neutrons are neutral. Neutrons are neutral. Now you tell me, around the nucleus, electrons are revolving. मैंने बोला था. And electrons are negatively charged. Electrons are negatively charged. ये देखो electrons है. Correct? अब मैंने न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कितने शेल बनाए हैं? There are how many shell around the nucleus? 2 shells. This is the first shell and this is the second one. Now ऐसा नहीं कि कौन से भी शेल में कितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है. It is according to its atomic number. अच्छा, फिलिंग भी जो करना इलेक्ट्रॉन का वो भी ऐसा नहीं कि घर का जैसा, ऐसा भी. In the first shell we can fill only 2 electrons. We can fill only till 2 electrons. अगर किसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही भरेंगे फिर. But capacity of first shell is 2 electrons. Second shell 8 electrons. Second shell 8 electrons. Third shell again 8 electrons. आगे ऐसे बढ़ता है फिर 2 8 8 18 18 32 ऐसा बढ़ेगा. But first of all, in foundation, we'll study only first 2-3 shells. So first shell, capacity of electron filling is till 2. Second shell, capacity is till 8. Third shell is also till 8. And these electrons are negatively charged. Now tell me once again, atom के center में क्या है? Nucleus. Nucleus consists of what? Protons and neutrons. Protons are positively charged, neutrons are neutral. And around the nucleus, electrons are revolving. And those electrons are negatively charged. I hope you understood the concept of and parts of an atom. अब 2 अच्छे वाले फॉर्मूले पढ़ने अपने को. कौन से हैं? Let me write down the first one. Number of protons is equal to number of electrons. मतलब जितने प्रोटॉन होंगे एटम में, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही घूमेंगे बाजू में. Means proton कहां पे है? Where the protons are located? In the nucleus. Suppose there are 4 protons, so they will be in nucleus. तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो न्यूक्लियस के बाजू में रिवॉल्विंग होंगे. आई होप समझा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and it is nothing but atomic number of that an element. मतलब if I am telling you atomic number of carbon is 6, atomic number of carbon is 6. ये आपको थोड़ा सा आपको बाद में बाहर करना पड़ेगा, मैं करा के लूंगा आपसे, डोंट वरी. So if my atomic number is 6, then there must be 6 proton, there must be 6 electron, and how many neutron? We don't know. So neutron number कैसे पता चलेगा? And for that we have one more formula. Number of protons plus number of neutrons is equal to atomic mass. So there are 2 different terms, my dear student. One is atomic number and another one is atomic mass. एक नंबर है, उसका एटम का मास है. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास. तो सपोज आई नो द मास ऑफ दैट एन एटम and I know the atomic number, so I can easily calculate number of neutrons present in the nucleus. Correct? Understood the concept? So these 2 formulae are very, very important. सबको समझा?
Now, one more question. If neutrons are neutral, leave it. छोड़ दो उसको बाजू में. Now, suppose I'm telling you number of protons is equal to number of electrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged, and both the numbers are equal. Then all plus will get neutralized by that minus charge electrons. So can you tell me the charge on an atom? जितने प्लस है अंदर न्यूक्लियस में उतने माइनस बाहर भी है. तो एटम पे चार्ज क्या हो गया? पकड़ो अंदर +50 तो बाहर भी -50, तो एटम पे चार्ज क्या हो गया? 0. मतलब एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज. एटम इज चार्जलेस. अच्छे से सुनो अभी फिर से 4 पॉइंट. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्जलेस, इलेक्ट्रॉन्स negatively charged, atom neutral. तो atom and neutron neutral, proton positively charged, electron negatively charged. हो गया बराबर? क्विज में रहेगा, अच्छे से सॉल्व करना है आपको. एंड दिस फॉर्मूले आल्सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूले. जब शाम को या कल मॉर्निंग में उठ के आप नोट्स में लिखोगे बुक में, एक बार पढ़ के फिर से लिखने का. सो विल गेट डबल रिवीजन. एक बार तो आपने सुना, समझा, फिर से देखा, फिर से पढ़ा, समझा, एंड देन यू आर राइटिंग. डबल रिवीजन. ऐसा ही बच्चा रैंक लाता है. बिलीव मी, मैंने भी ऐसी रैंक मेरा लाया था. चलो अब क्या करेंगे? स्लाइड तो खत्म. यू आर गोइंग टू टेक अ पिक ऑफ दिस स्लाइड. ले लो पिक. डन. चलो फाइन. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. पार्ट्स ऑफ एन एटम पढ़ लिया. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू शो यू दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपने देखा था. बराबर? नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं. अब थोड़ा थोड़ा आगे आगे अपने को थोड़ा फाउंडेशन के ऊपर बढ़ना है. वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर लेवल ऑफ लर्निंग. नाउ इन दिस फाउंडेशन lecture, I have told you that these are elements placed in modern periodic table. Smallest part of an element is an atom. Even we have studied parts of an atom. 2 formulae also we have studied. Now, this is our periodic table, and see which element is flashing. This is one of my favorite. And this element is carbon. This element is carbon. Most important element for organic chemistry. For organic chemistry. In today's session, we are going to also study different branches of chemistry. And organic chemistry is one of the very, very important branch. So this carbon is very important. So let us study regarding this carbon. So carbon, atomic number of this carbon is 6. Atomic number of carbon is 6. And C is the symbol for this carbon. And it is capital C. It is not small letter c. Capital letter C is the symbol for carbon. Chemical name, already told you, carbon. And atomic mass, 12.011. This is the exact figure for atomic mass. Now you will ask me, sir, you told me atomic number is equal to number of proton is equal to number of electron. तो कार्बन का प्रोटॉन 6 है न्यूक्लियस में, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर. न्यूट्रॉन कितना होगा? This minus this. बट 12.011 माइनस 6 करेंगे तो न्यूट्रॉन तो फ्रैक्शन में आएगा. एंड फॉर दिस सिंप्लिसिटी, दिस नंबर वी आर गोइंग टू फिगर इट एज 12.
we are not going to consider that 0.011. The exact atomic mass is 12.011. But for our simplicity, for calculation, we are considering atomic mass of carbon is just 12. So can you tell me, if atomic mass is 12, atomic number is 6, means it is number of proton, then how many neutrons will be present in carbon? Yes, answer is 6 again, because we know that number of proton plus neutron is equal to atomic mass. So 6 plus 6 is equal to 12. It's very simple. I hope you understood. चलो इसका भी फोटो होना चाहिए आपके पास. Here in this slide, what is important? Symbol of carbon is capital letter C. Atomic number of carbon is 6. Atomic mass is exact value is 12.011. But for our simplicity and for calculation, we are using just 12. Understood? Please take a peek of this slide again. Okay. Now, on the next slide, again, most important concept regarding carbon. It's electronic configuration. अब ये थोड़ा बहुत से बच्चे को डर लगेगा, जो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है. सर वी डोंट नो एलिमेंट, आप कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो. एलिमेंट तो अभी जस्ट समझ में आने लगा है सर. आज का लेक्चर तो छोड़ो, बाद में सिखाओ कॉन्फ़िगरेशन. बहुत सिंपल है. केमिस्ट्री इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप समझ जाओगे. चलो फटाफट बोलो. फर्स्ट शेल, what was the capacity of filling electron? I told you 2. Second shell, what was the capacity? I told you 8. Now electron is nothing but number of proton, number of electron is nothing but its atomic number. So carbon will have how many electrons? 6. पकड़ लो, पहले शेल में 2 का कैपेसिटी था, 2 पहले शेल में गया. Now in the second shell, capacity is 8, but we have to fill how many? Because we have only 6 electrons and first shell has 2 electrons. So in the second shell, we have to fill how many electrons? Correct? 4 electrons. How many electrons? 4. I know that capacity is 8, but we don't have these many electrons. So only 4 electrons are there in the second shell of carbon. Let me show you that. ये जो भाषण दिया ना इतना बड़ा रामायण, बोल के खाली समझता नहीं, दिखाना भी पड़ता है. अपना आंख है ना ज्यादा काम करता है as compared to कान. Correct? Vision works more as compared to audio. ध्यान में रखो हमेशा. चलो देख लो. Carbon, and this is my carbon. Carbon, atomic number 6, mass for simplicity 12. So P6, proton 6, neutron is N, that is 6. 6 plus 6 is 12, that is atomic mass. This is atomic number. Now this cluster is known as what? Nucleus. And I told you, number of protons is equal to number of electrons is equal to atomic number. तो जितना atomic number है उतने electrons है. And these electrons are revolving around the nucleus. अब चेक करो कितने electrons घूम रहे हैं nucleus के बाजू में? 6. करेक्ट. इन द फर्स्ट शेल, क्या मैंने 6 के 6 पहले शेल में डाल दिया? नहीं डाल सकता भाई, रूल बनाए हैं. बराबर. किसने बनाए हैं, क्या बनाए हैं, वो सब अपकमिंग लेक्चर्स में. आज खाली थोड़ा फंडा समझ के रखो. इसका और डिटेल हम पढ़ेंगे 1 by 1 in upcoming lectures. So in the first shell, why we have not directly filled 6 electron? भाई बोला है capacity is only 2. आपको दिख रहा है ये 2 electrons are revolving in first shell around the nucleus. And बाहर तो 8 भर सकते हैं second shell में, but 8 भरने का जरूरत है क्या? अपने पास उतने है ही नहीं. 6 ही एटॉमिक नंबर है, तो 2 तो भर गए और 4 बचे हैं. So remaining 4 electrons we will put in second shell. Correct? So 2 electrons in the first shell, 4 electrons in the second shell. इतना समझाना आपको. इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसको ही क्या बोलते हैं?
Electronic configuration. So what is the electronic configuration of carbon, my dear student? 2, 4. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखो, कॉमा करके सेकेंड शेल में कितने हैं वो लिखो। कितना सिंपल। अब 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी सोचेगा, हाँ सर मुझे भी आया, बराबर। अच्छा, ऐसा आप कौन सा भी एलिमेंट उठा लो। अच्छा, हो सकता है माय एटॉमिक नंबर इज 13, माय मतलब मेरा नहीं, हाँ, एलिमेंट जो मेरे पास है एटॉमिक नंबर इज 13, एल्यूमिनियम एलिमेंट का 13 एटॉमिक नंबर है। आप बोले सब याद है क्या? हाँ सब याद है, आपसे भी याद करा के लूंगा, डोंट वरी। बहुत सारे गाने अपने पास, पिक्चर का या मूवी का सॉन्ग कैसा आप ध्यान में रख लेते हो? पुष्पा देखा है ना, सब गाने बाहर है ना, वैसी गाना दूंगा, आपके पूरे एलिमेंट बाहर हो जाएंगे, बराबर। तो जैसे एलिमेंट मैंने बताया एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो फर्स्ट शेल में कितने बोलो? 2, सेकेंड 8, पूरा आठों फिल करना ही पड़ेगा क्योंकि 13 तक जाना है अपने को। 2 + 8 10। थर्ड शेल का कैपेसिटी भी मैंने बोला 8 तक है, बट 8 भरोगे कि जितना चाहिए उतना भरोगे? चाहिए उतना ना। सो 2 8 3 दैट इज इक्वल टू 13। तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 2, 8, 3। Simple. I told you earlier, chemistry is very simple. So here we are studying for carbon. तो कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 4। अब और एक कंसेप्ट है, मैं बोलते बोलते देखो ऑक्टेट कुछ तो बोला मैंने, ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 एंड सेकेंड शेल का कैपेसिटी मैंने बोला 8। एंड इफ एनी एलिमेंट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट मतलब एकदम बाहर वाला। अब इसमें आउटरमोस्ट शेल कौन सा है बोलो? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो वाला आउटरमोस्ट है कि जिसमें 4 घूम रहे हैं वो? करेक्ट, जिसमें 4 घूम रहे हैं वो। मतलब ऐसा शेल जो न्यूक्लियस के पास नहीं, एकदम बाहर वाला, एकदम बाहर पकड़ो। ऐसा और एक है, और एक है, और एक है, तो इधर वाला जो है वो आउटरमोस्ट है, करेक्ट। तो इन दैट आउटरमोस्ट शेल सपोज 8 electrons are there, 8 electrons, exact 8, then that is a stable condition for an element. ये बोला था ऑक्टेट रूल ने। What is octet rule? If valence shell और outermost shell को ही बोलते हैं valence shell, outermost shell और valence shell contains 8 electrons, then we can say that that species is stable. अब क्या कार्बन स्टेबल है? Is my carbon stable? No, because it don't have 8 electron in outermost shell. It is having only 4 electrons. 8 होने के लिए कितने का जरूरी है? 4 है, 8 करने का है, तो कितना और चाहिए? 4 और चाहिए। एंड therefore the valency of carbon is 4. तो ये जो वैलेंसी जो पढ़ना है ना अपने को, वो 8 होने के लिए कितना चाहिए उसको वैलेंसी बोलते हैं, ध्यान में रखो। 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, सर लंच ही इतना भारी हो गया, संडे था, और कितना एसिडिटी कराओगे? कुछ नहीं होता एसिडिटी, थोड़ा नया सुनने का आदत डालो, हो जाएगा। एकदम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा हूं। सो व्हाट इज वैलेंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट how many electrons are there in outermost shell, and we want 8 for stability. That is octet rule. Octet means 8. So here 4 electrons are there in outermost shell, so we want 8 for stability. So 4 are there, we want 8, so we'll require 4 more to complete its octet. Therefore the valency of carbon is 4. I hope you understood. Correct? Suppose one more example. In my outermost shell there are 6 electrons. There are how many? 6 electrons. Can you tell me the valency for that atom? 6 electrons. We want stable, we want stability. So 6 electrons are there, we want stability. So what should be the valency for that atom? Correct, it is 2, because we know that 6 and 2 more will become 8. तो आई होप समझो आपको वैलेंसी कैसे ढूंढते हैं।
अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज, उसको क्या लगता है अभी यहां पे कोइंसिडेंस ऐसा है कि कार्बन को 4 चाहिए 8 होने के लिए, तो वैलेंस इज 4। बच्चा क्या समझ लेता है, ऑलरेडी 4 है उसको वैलेंसी बोलते हैं। नो, जितने आउटर मोस्ट शेल में है उसको वैलेंसी नहीं बोलते हैं, वैलेंसी उसको बोलते हैं जितने चाहिए टू बिकम 8। आई होप ये फंडा क्लियर। चलो ऑक्टेट रूल देख लेते हैं जो मैंने बता दिया। सो ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट atoms are more stable when their valence shell, that is the outermost shell, are filled with 8 electrons। देखो जो मेन है मैंने कलर मारा है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू बी हाईलाइटेड। तो आपको जब नोट्स लिखेंगे नोटबुक में आप उधर अंडरलाइन करना, समझा? जो जो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है बराबर फोटो से देख के लिखना है आपको। एंड व्हाट इज द वैलेंस ऑफ कार्बन? आई टोल्ड यू इट इज 4। वैलेंस इज 4। आई होप द स्लाइड इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं खोल रहा हूं अभी भी, वो तो अपकमिंग लेक्चर्स में खोलूंगा। बेसिक से ही जा रहा हूं ऊपर। बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर टावर कैसे बनाएंगे और रैंक कैसे लाएंगे? करेक्ट। चलो ले लो इसका एक फोटो, प्लीज टेक अ पिक। Okay, now we have studied for carbon, correct? Now we are going to study for hydrogen. So again here is a periodic table. ये पहले देखा था हम लोगों ने, बराबर? अब देखो कौन सा फ्लैश करा रहा हूं, दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ये सबसे टॉप पे है, ये सबसे टॉप पे है। सो हाइड्रोजन सिंबल इज कैपिटल H। कार्बन का कैपिटल C था, इसका कैपिटल H, स्मॉल h नहीं लिखने का, कैपिटल H। एटॉमिक नंबर इज 1। द एग्जैक्ट मास नंबर इज व्हाट? 1.008। But for calculation, we are going to take a simple number, that is 1. Correct? So atomic number is 1, means number of proton 1, number of electron 1. Even atomic mass is also 1. So can you tell me number of neutrons in hydrogen? Proton 1, mass is also 1. So what is the number of neutron in hydrogen? 0, because 1 plus 0 is equal to 1. So hydrogen don't have any neutron. अब बोले क्या बोलते हो सर, हमने तो सुना हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट। अब ये एक नया कंसेप्ट आया, देखो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो मास विल बी 2। दैट इज आल्सो हाइड्रोजन, बट दैट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप मींस व्हाट? आइसोटोप एक नया वर्ड आया, देखो आइसोटोप, same atomic number but different mass number. Same atomic number but different mass number. And this isotope concept we are going to study in detail in our next lecture. खाली सुन के रखो कि न्यूट्रॉन भी चेंज हो सकते हैं, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होंगे। एटम का जो एटॉमिक नंबर है that is fixed for proton and electron. Number of neutrons can be changed, so its mass number can be changed. जैसे कार्बन मास नंबर was 12, ऐसा भी कार्बन मार्केट में मिलेगा आपको जिसका मास नंबर इज 14। आइसोटोप वाला कंसेप्ट है, आइसोटोप। आज खाली सुनो, इधर नहीं गया तो भी चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में इधर भर दूंगा। करेक्ट? So hydrogen, atomic number 1, atomic mass is also 1 for simplicity, and symbol is capital H. Please take a peek. Next slide. Now I told you, I promised you that I'm going to deal with different branches of chemistry in today's session. So there are total 4 branches of chemistry. The first branch is physical chemistry, which deals with volume, mass, physical properties, melting point, boiling point, density, etc. Second branch is my favorite, organic chemistry, which deals with carbon,
ध्यान में रखो अच्छे से. थर्ड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक डील्स विथ कार्बन. इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक नहीं, मतलब डू नॉट डील्स विथ कार्बन या डज नॉट डील्स विथ कार्बन. ऑर्गेनिक डील्स विथ कार्बन, इनऑर्गेनिक डज नॉट डील्स विथ कार्बन. अब आपको समझा रहेगा मैंने कार्बन क्यों आपको पढ़ाया और कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी क्यों पढ़ाया, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज माय फेवरेट. एंड द लास्ट ब्रांच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री or analysis instrumentation is in this branch, that is analytical chemistry. Correct? And in today's session, we are going to just increase our step from organic chemistry. So let me tell you what are an organic compound. पहली बोला organic chemistry deals with which element? Carbon. So organic compounds are those compounds which contains carbon, which contains carbon, the compound which mainly contains carbon atoms in their molecules. Yes, एक बच्चा बोला सर पहले स्लाइड का फोटो लेने नहीं दिया, जरूरत नहीं था, पर चलो आपको चाहिए ले लो फोटो. ये स्लाइड आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू नहीं आएगा. चलो ओके. So what are organic compounds? Organic compounds mainly contain carbon. Example. बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के लाया मैंने. मीथेन, बेंजीन, इथेनॉल, ग्लूकोज, ये तो सब मालूम है ना आपको. मीथेन, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो नाम के साथ फॉर्मूला भी बाय हार्ट करना पड़ता है. मीथेन, द फॉर्मूला इज CH4. अब ऐसे कितना बाय हार्ट करना है, डोंट वरी, आई एम देयर, सब आपसे बाय हार्ट करा के लूंगा, मस्त शॉर्टकट से अपने पास. कोई भी एमसीक्यू ज्यादा टाइम लगाने नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए, शॉर्टकट्स आर देयर. खाली अच्छे से सुनो और नोट्स बराबर कंप्लीट करते रहना और उसको रिवाइज करते रहना, देन रैंक आपके जेब में पक्का, वो भी टॉप वाला. मीथेन CH4, बेंजीन C6H6, इथेनॉल पीने वाला दारू इथेनॉल C2H5OH, ग्लूकोज C6H12O6. Each and every compound contains carbon. Each and every compounds contain carbon. देखो दिख रहा है आपको, C, and therefore these are examples of organic compound. These are examples of organic compounds. Now you will ask me, sir, carbon monoxide, CO, the formula is CO. Carbon dioxide, CO2. These two compounds, and there are 3 more, 4 more, 5 more, some more compounds, has carbon in its molecule, but these are not organic compounds, these are inorganic compounds. ऐसा कैसा? अभी तो आपने बोला सर, the compound which contains carbon are known as organic, but carbon dioxide, carbon monoxide are inorganic. So my dear friends, there are few exceptions. There are few exceptions such as carbon monoxide, carbon dioxide, carbonates, cyanates. These are all follows properties of inorganic compound, and therefore, though it contains carbon, those are inorganic compounds. आप बोलेंगे सर रुको ना, कितना फास्ट लिखने तो दो, मत लिखो. These all concept we are going to cover in the next lecture. आज खाली सुनना है आपको. करेक्ट, फाउंडेशन है ना आज, सुनना, ज्यादा मेहनत नहीं लेने का संडे के दिन. करेक्ट, तो खाली ध्यान में रखो, ऐसा नहीं है कि बाबा कार्बन आया तो ऑर्गेनिक. There are few exceptions, and those exceptions I am going to write on the slide, and you are going to take a pic in the next lecture. Fine. आगे बढ़ते थोड़ा सा. One more definition for today's lecture. One more definition. ज़्यादा बोर नहीं करूँगा. See this compound, methane. Just now I have told you this is organic compound. CH4. Ethene.
C2H4 again contains carbon. This is also an organic compound. Benzene, ये भी अभी लिखा था मैंने, C6H6, again this is organic compound. Now one common factor is there amongst these three compounds. These compound contains only 2 atoms. अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, बट मेन 2 एलिमेंट कौन से? वन इज कार्बन, अनदर वन इज हाइड्रोजन. वन इज कार्बन, अनदर वन इज हाइड्रोजन. सो कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन and hydrogen. Such compounds are known as hydrocarbons. Such compounds are known as हाइड्रोकार्बन्स. अब आपको समझा रहेगा वो कार्बन और हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल से फ्लैश करने का सस्पेंस. मुझे ये चालू करना था, ये चालू करना है. मतलब मेरे बिल्डिंग या टावर का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन. I want to start with a chapter hydrocarbon, which is most important for our competitive exam. बहुत सारे MCQs आते हैं ये चैप्टर में से. And for that, we have to create or build a base for carbon and hydrogen. इसके लिए वो 2 स्लाइड. I hope you understood. So compound containing carbon and hydrogen atoms only are known as hydrocarbon. Understood? अब ये हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन तो लिखा हुआ ही है. नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. चलो थोड़ा पीछे जाते हैं. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? C6H12O6. It is an organic compound, but it is not hydrocarbon. Why? It is not hydrocarbon. Glucose is not hydrocarbon. Why? Yes, because it contains extra oxygen. So what is exactly hydrocarbon? It must contain only carbon and hydrogen, no any other atom. Correct? So glucose is an organic, but it is not hydrocarbon. Means, can I say this? All hydrocarbons are organic compounds, but all organic compounds are not hydrocarbons. Understood? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके ऊपर फोकस करो, जो आगे के लेक्चर के लिए सस्पेंस है. दिस वन. इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं. अच्छे से फॉर्मूला देखो, अच्छे से. व्हाट इज द फॉर्मूला? C6H12. अगेन दिस इज हाइड्रोकार्बन, कंटेन्स ओनली कार्बन हाइड्रोजन. बट फॉर्मूला एक, नाम 2 है. देयर आर 2 कंपाउंड्स ऑफ दिस फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सेन और हेक्सीन. साइक्लोहेक्सेन और हेक्सीन. एक और टर्म सुनो, जैसे आपने आइसोटोप सुन के रखा है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड्स. आइसोमर. क्या बोला मैंने नाम? आइसोमर. ये भी नेक्स्ट टाइम खोलूंगा मैं चैप्टर में मेरे. तो ऐसे के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लैश हो रहा है? क्यों हो रहा है? पर्पस है. वी हैव सो मेनी कंपाउंड्स विथ वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट देयर नेम्स आर डिफरेंट. सो हाइड्रोकार्बन भी क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है ना अपने को. एक ही थोड़ी है, एक ही फॉर्मूले के बहुत सारे कंपाउंड्स है. सो फॉर दैट वी नीड टू स्टडी व्हाट? वी नीड टू स्टडी व्हाट? Classification of hydrocarbons. We need to study what? Classification of hydrocarbons. बट मुझे पता है आपने स्लाइड का फोटो नहीं लिया है. चलो फोटो ले लो फटाफट. डन. अच्छा, इवन आई गेस आपने लास्ट स्लाइड का भी नहीं लिया होगा, इसका भी ले लो. डन. अब आप बोलोगे सर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे? आज नहीं पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही. एसिडिटी हो जाएगा ना. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई वांट टू स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो what we have covered in our today's foundation session: modern periodic table, all elements are properly placed according to their atomic numbers. What is an atom? Parts of an atom: carbon, hydrogen,
branches of chemistry, two main formulas, then organic compounds, hydrocarbons, and classification of hydrocarbons to be continued in the next upcoming lectures. Now, क्या मैंने बोला था पहले? जैसे session खत्म, I'm going to conduct a quiz. I'm going to conduct a quiz. Now, there are only 10 questions in the quiz, which are all based on today's session जो अभी हमने पढ़ा है. आपने ध्यान में भी रखा होगा बहुत सारा कंसेप्ट. लिखने वाला तो बाद में होगा, राइट? So I'm going to open that quiz. Now, for that, you need a mobile. चलो, तो quiz start करते हैं. It's a quiz time now. After every session, there will be a quiz. Only 10 questions and time allotted for 10 questions. Just 2 to 3 minutes. हमने इतना कम टाइम, भाई रैंक लाना है. वी आर टॉपर्स. कम टाइम में जो फास्ट सॉल्व करता है वो भी करेक्ट. दोज आर रैंकर्स. दोज आर रैंकर्स. कैसे सॉल्व करना है वो बाद में सिखाऊंगा ही मैं आपको. चलो फटाफट क्विज अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ओपन ब्राउजर, एनी ब्राउजर, गूगल पे जाओ चलेगा. एंड इन दैट ब्राउजर राइट डाउन joinmyquiz.com. You have to write down. देखो ये ब्राउजर दिख रहा है आपको, joinmyquiz.com. Enter. अच्छा, they will ask you one game code and your name. So please write down your full name. जैसे मेरा नाम अविनाश कदम. Just don't write अविनाश, क्योंकि अविनाश नाम के बहुत सारे लड़के होंगे ना. नाम भी लिखो, सरनेम भी लिखो, करेक्ट. एंड दिस इज द पास वर्ड, भी क्या है, पास कोड बोलेंगे, आप पास नंबर बोलो. दिस इज द कोड 687604. फिर से बता रहा हूं क्या करना है आपको. ओपन एनी ब्राउजर एंड यहां पे लिखो joinmyquiz.com. एंटर इट. They will ask you one game code and your name. So write down your full name, and this is the game code 687604. Fast. See here. 68 students have joined already for this quiz. 78, 80, 82, 84. Very good, very good, very good. I'll wait for only 30 seconds more. And I'm going to start this quiz. खाली मुझे ये क्लिक करना है. Fast. Fast, fast. 112. Very good, very good, very good. Last 20 seconds, fast. Fast. Again, I'm repeating the game code. It is 687604. Go to the browser, joinmyquiz.com, enter it, put down your name, and our game code for today's session is 687604. Let us start with our quiz now. There are how many MCQs? 10 MCQs. Time allotted for the quiz is 2 to 3 minutes. ध्यान से अटेम्प्ट करो, कुछ घाई नहीं है. क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन समझो, एंड मार्क द करेक्ट आंसर. मुझे देखना है कौन कम टाइम में ज्यादा करेक्ट सॉल्व करता है. एंड आई शो यू द लीडर बोर्ड ऑल्सो, हु इज द टॉपर फॉर टुडे सेशन. आपको मैं रैंक दिखाऊंगा, टॉप 1, टॉपर 2, टॉपर 3, सब रैंक दिखाऊंगा आपको मैं. सो विल कम टू नो दैट वेयर आई स्टैंड फॉर टुडे सेशन. Let us begin. So I'm starting the quiz now. All the best. I'll mute the sound. You can see the leaderboard. क्या बात है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सबने करेक्ट किया. वेरी गुड. नाउ हु इज द टॉपर एट द लीडरबोर्ड? इट्स श्री रंगन. वेरी गुड. देन हर्ष. Oh, Harsh is also at first place. Okay, second. Then first is now Virat.
ये रैंकिंग चेंज होती रहेगी. Ultimately, after attempting all 10 MCQs, we'll get an actual topper for today's session, my dear students. चलो फास्ट. क्या बात है, विराट के ऊपर दीपल. वेरी गुड. दीपल, हर्ष, धृति. विराट इज अगेन टॉपर. फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास. गो अहेड. धृति अगेन. दीपाल. बाकी के बच्चे भी कोशिश करो, कोशिश करो. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. फास्ट, फास्ट. धृति, देन हर्ष. धृति, देन विराट, हर्ष. सोहम भी आ गया बीच में. क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड. कुछ नए नाम आ रहे. आयुष, वेरी गुड. कुछ नए बच्चे भी एंटर कर रहे हैं टॉप 3 में. वेरी गुड. आयुष, वेरी गुड. सोहम, वेरी गुड. फास्ट, फास्ट, फास्ट. Ayush attempted all 10. Riti attempted all 10. Fast. Now let me see कितने MCQs पेंडिंग है और बाकी बच्चों के. चलो, बहुत सारे बच्चों ने 8 MCQ तो सॉल्व कर लिए है. वेरी गुड. गुड अटेम्प्ट इन द फर्स्ट सेशन. You have done a good attempt. Very good. Mind blowing. Keep it up. Okay, fine. Now last 30 seconds. Last 30 seconds, and then I'm going to end the squeeze. And we'll get our 3 toppers for today's session. तो फिलहाल तो फर्स्ट रैंक पे विराट है, सेकेंड आयुष, एंड थर्ड इज धृति. अगर मैं आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो प्लीज डोंट माइंड. वी आर फ्रेंड्स. यू कैन अज्यूम मी एज योर फ्रेंड. चलो, लास्ट 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time is up. I'm going to end this quiz now and see the leaderboard, my dear students. And we have our top 3 rankers. Here is the first rank, Virat. Second is Ayush, and third one is Dhriti. A big clap for all these 3 rankers, which are the toppers for our today's session. A big clap. चलो बाकी बच्चे फटाफट ताली बजाओ. ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में बाकी लोगों ने अपने लिए ताली बजाना चाहिए. अच्छा, ये 3 रैंकर भी अपने लिए ताली बजाओ कि आपने अच्छे से पूरा सॉल्व किया. सी द सॉल्विंग. विराट, ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट. ये देखो यहां तक अगर आपको देखना है अच्छे से, जो फर्स्ट, आप अपना नाम देख सकते हो कौन से रैंक पे है, बाजू में लिखा हुआ है. ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट. वेरी गुड. हाँ, इनका एक रॉन्ग हो गया है. सौम्या सिंह, एक रॉन्ग हो गया है. डोंट वरी बेटा, हो जाएगा. आपने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया मैं बताऊं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन ही ज्यादातर रॉन्ग जा रहा है आपका. वंस अगेन रिविजन. नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electron is equal to atomic number, and number of proton plus number of neutron is equal to atomic mass. उसमें ही गड़बड़ हुआ है. ठीक है, मैंने लिखने नहीं दिया था ना, बट जब शाम को लिखोगे या कल लिखोगे पहाड़ हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पूछूंगा. फाइन, आप रैंक चेक कर सकते हो. If you want to view your full report, I'll send it to you, and I hope 1 घंटे का सेशन केमिस्ट्री हुआ. बोर तो नहीं हुए आप लोग? इंटरेस्टिंग हुआ? मजा आया? कुछ तो बोलो, कुछ तो लिखो. चैट में लिखो, चलेगा? चैट में लिखो, चलेगा? I hope you enjoy this session. Foundation chemistry.
And in my next session, next upcoming lectures, we are going to study hydrocarbons and different concepts of chemistry. So I hope you enjoy our today's session. And let me tell you one more thing, my dear student. Now you take a break of 5 minutes. 1 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा तो सैचुरेशन हुआ रहेगा ना. You take a break of 5 minutes. वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाके आओ, पानी पी लो, कुछ चाय कॉफी या जूस लेके बैठना है, बैठो. One more session is there, which is of biology subject, and again it will be an interesting one. And the session will be conducted by one of my friend, a star teacher, Mr. Anish sir, a bio professor, botanist, is going to come here and deliver a session, a nice session, and will give you his time. So please take a break of 5 minutes and come again. Thank you very much. Take care, all of you. Hey, hello, my dear बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? Well, today we will discuss a very simple topic in biology. All right, you must be aware about cells, right? बस हम लोग cell biology से ही start करेंगे. Okay, बच्चों, this is to create a basic foundation. All right, so students, यहाँ पे मैं start करूंगा एक proverb के साथ. आपको नजर आ रहा है? What does it say? If it squirms, it's biology. If it stinks, it's chemistry. If it doesn't work, it's physics. And if you can't understand it, it's mathematics. Right? तो अगर कोई चलते हुए दिखता है तो बायोलॉजी है. Alright? हम बायोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है ना. अगर कहीं से बदबू आ रही हो तो उसके पीछे केमिस्ट्री है. राइट? और अगर कोई चीज नहीं चल रही हो, इसका मतलब उसका फिजिक्स खराब हो चुका है. करेक्ट? यू नीड टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम फ्रॉम बाय यूजिंग फिजिक्स. ऑलराइट? एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, देयर इज समथिंग फिशी विद द मैथमेटिक्स. ऑलराइट? उस चीज के पीछे की मैथमेटिक्स आपको समझ में आई नहीं है. Do you understand the proverb now? चलें आगे. हम तो बायोलॉजी से डील करेंगे और कुछ नहीं. What do you see? No, that's not my wife. Well, शक्ल देख के लग रही होगी तुमको. नहीं, बिल्कुल. Well, in this picture you can see some living organisms, right? किधर किधर living organisms और कौन सी चीजें नॉन लिविंग है? लाइफ एग्जैक्टली है क्या? हाँ बच्चों. So can you see this house out there? Yeah, that's non-living. This pillar is also non-living. तो फिर इस इमेज में लिविंग है क्या एग्जैक्टली? Yes, anti-living है कि नहीं? Again, the tree that you see in the background, the trees, the grass, everything, everything from kingdom plant is what is living in this image, correct? तो इस इमेज में लिविंग चीजें भी है और नॉन लिविंग भी है, राइट? चलते हैं आगे. बच्चों, नहीं, ये मेरा बच्चा भी नहीं है. ओके. Well, color देख के समझ जाओ. So, what is this? Why have I shown you this child? Well, this child is an organism, right? Just like us. हम भी living organisms है, ये भी living organisms है, correct? ये बिल्कुल हमारे जैसा ही है. Okay? And then this organism is made up of organ systems, all right? An organism is made up of what? Organ systems. बच्चों, जो मैं तुमको अभी सिखा रहा हूं ना, this is called levels of organization. I want you to write it down. Okay? Write it down. Biology foundation lecture लिखिए और उसमें सबसे पहले लिखिए levels of organization और उसके अंदर लिखिए and a living organism, एक एरो बनाइए. A living organism is composed of organ systems. Do you know any organ systems yourself? Do you know? आपको organ systems पता है? Yes, my dear friends, जो अभी आप guess कर रहे हो वो सब correct है. जैसे कि respiratory system, excretory system, digestive system, circulatory system, etc., etc. Isn't it? Even nervous system जो यहाँ पे इस image में दिखाई दे रहा है. Correct? Well, my dear students, organ systems are composed of what?
organ systems are composed of organs. दिखाई दिया? Organ systems are composed of organs. And then, my dear friends, these organs are in turn made up of tissues. All right? Tissues combine together to make organs. And further ahead, organs work together to form a system called organ system. Isn't it? Well, let me tell you what the tissues are made up of. Tissues are made up of nothing else but plain and simple cells. All right, my dear friends, cell क्या होता है? आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे. A cell is the fundamental, structural, and functional unit of life. All right, a cell is the fundamental, structural, and functional unit of life. Why do we say so? हम ऐसा क्यों कहते हैं? Why do we not say कि सेल के अंदर के जो पार्ट्स है जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट, इवन क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, why are those not the basic, fundamental, structural unit of life? क्यों नहीं है? सेल के अंदर वाले पार्ट्स बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स क्यों नहीं है? Why? The reason is because a cell is complete. All right? A cell is complete and sufficient. All right? Let me answer this question. A cell is complete and sufficient to exist independently. A cell can show independent existence and it can perform all the essential functions of life. Okay? जीने के लिए जो सारे functions perform करने होते हैं, एक सेल वो सारे परफॉर्म कर सकता है. ऑलराइट बच्चों, कैन यू टेल मी which is the cell with which you and I started our life? हमने हमारी जिंदगी कौन से सेल के तौर पर शुरू की थी? तुम्हारे दिमाग में जाइगोट आया ना? करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों. We started our life as a single cell, which is the zygote stage. हम सब sexually reproducing organisms zygote stage से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं. All right, and that zygote, my dear friends, is what has given rise to this entire organism. All right, my dear friends, चलते हैं आगे. तो सेल हमारा बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ऑलराइट, व्हाई? रिपीटिंग द आंसर अगेन, बिकॉज इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. ऑलराइट, खुद सब कुछ कर सकता है, एकटा जीव सदाशिव. ऑलराइट, चलते हैं आगे बच्चों. नेक्स्ट थोड़ी डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे. थोड़ी हिस्ट्री में जाकर देखेंगे कि सेल्स के बारे में हमें जो ज्ञान है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी. ऑलराइट, लेट्स सी. द फर्स्ट साइंटिस्ट वी विल टॉक अबाउट इज एंटोन वैन ल्यूवेनहिक in the year 1674. By the way, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ऐसा छोटा मोटा साइंटिस्ट नहीं है. ओके, नाउ दिस पर्सन, अगर आप इसका सरनेम पे ध्यान दोगे, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस नहीं है. इट्स ओनली न्यू फॉर यू. इट इज वेरी इजी. आप मेरे साथ इसको 4 टुकड़े करके प्रोनाउंस करो और फिर एक साथ करो. रेडी? पहला पार्ट ली, बोलो ली. उसके बाद यू, ली, फिर यू, फिर वेन, और उसके बाद हिक. से ली, यू, वेन, हिक. ऑलराइट, लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं. So you need to divide this like this. ली, यू, वेन, हिक. बोलो ल्यूवेनहिक. बोलो ल्यूवेनहिक.
अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे सर इधर तो ओ भी है तो हीक क्यों बोल रहे हो? अब ओ ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड ईसोफेगस भी तो होता है ना, एंड्रीशियम भी तो होता है, गाइनीशियम भी तो होता है, करेक्ट? सो इवन दिस ओ ई हियर इज प्रोनाउंस्ड एज ई. ऑलराइट, सो द नेम इज एंटोन वैन ल्यूवेनहीक. बोलो मेरे साथ, ली यू वेन हिक, ल्यूवेनहीक. चले आगे. हैंग ऑन. So, in the year 1674, it was Mr. Anton van Leeuwenhoek who first saw and described a living cell. Bachcho, this person has an entire list of objects or things that he has observed through microscopes. First of all, let me clarify that this person was not a biologist initially. Okay, he was a merchant, he was a businessman who used to deal with lenses and mirrors. All right, lenses or mirrors ka businessman tha ye. All right, so he designed a microscope for himself. All right, and he made an improved microscope. All right, बच्चों, इसके पहले जो भी माइक्रोस्कोप्स बने थे, लेट मी गिव यू अनदर नेम, ओके, व्हिच विल नॉट कम देयर ऑन द स्क्रीन. रॉबर्ट हुक नाम का एक बंदा था इसके जस्ट पहले. ओके, ल्यूवेनहीक का ईयर 1674 है. रॉबर्ट हुक was in 1665. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स देखे थे पहली बार. अब तुम बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर? यहां पे आप लिखते हो कि फर्स्ट दिस गाय सॉ एंड डिस्क्राइब्ड द लिविंग सेल, और अब बोल रहा हूं कि रॉबर्ट हुक सॉ सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. बच्चों, बी क्लियर इन योर माइंड दैट रॉबर्ट हुक सॉ डेड सेल्स. ये लिविंग सेल्स लिखा हुआ है, नजर आया? क्लियर? ओके. सो रॉबर्ट हुक took cork cells and he observed compartments of the same size almost, and those were all dead cells. So he gave the word cellula, which means compartments. All right. So what about Leeuwenhoek? Leeuwenhoek came across living cell. All right. ये वो बंदा है जिसने पहली बार लिविंग सेल देखा. Not just that, बच्चों, इस बंदे ने 300-400 चीजें लेंस के नीचे डाल के स्टडी कर ली. यू कैन फाइंड दैट लिस्ट ऑन गूगल. ऑलराइट, सो एंटोन वैन ल्यूवेनहीक, ऑलराइट, पुट ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द लेंस. ओके, जैसे कि सलाइवा, स्पर्म, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये जो गम स्क्रैपिंग्स है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही कुड ग्रैब हिज हैंड्स ऑन, ही पुट इट अंडर द लेंस. All right, and he tried to study if they are made up of cells or not. And that is the reason why we have crowned him as the father of microbiology. Microbiology as a subject was born after his phenomenal discoveries or his phenomenal work, which proved to be instrumental in developing the subject. All right, students, chalte hain aage. Then अराउंड 150 years later, देखो, सेल से न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए हमें लग गए 150 साल. 150 years approximately. You can do the math later. And if you don't understand, it's mathematics. याद है? Well, 1831 it was when Robert Brown, okay, Robert Brown saw a central structure in plant cells, and he called this structure as nucleus. All right. So Anton van Leeuwenhoek saw a living cell, but उस सेल के अंदर का न्यूक्लियस देखने के लिए लग गए 150 साल. All right. When it was Robert Brown in 1831 who observed the nucleus for the first time. All right.
चलते हैं आगे थोड़ी और स्टोरीज में। 1838 रॉबर्ट ब्राउन के भी बाद का समय। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, I'm sorry I did not introduce myself. My name is Anish Dutt and I am a botanist. Okay. अभी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? क्योंकि मेरे सामने एक दूसरा बॉटनिस्ट आ गया है। ओके तो मुझे याद आया कि मुझे भी अपने आप को एज अ बॉटनिस्ट इंट्रोड्यूस करना है। ओके आई एम अ बॉटनिस्ट, आई एम एन एमएससी इन बॉटनी। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट दिस जेंटलमैन हैज डन फॉर द सेक ऑफ साइंस। ऑलराइट, इनका रिसर्च क्या कहता है? 1838 Matthias Schleiden. All right, Matthias Schleiden, he was a botanist. Okay, German botanist था ये, German. Schleiden, Schleiden, Schumacher, ये सारी श वाले नाम है ना, मोस्टली जर्मन होते हैं। करेक्ट? सो Matthias Schleiden examined all plant specimens. Obviously botanist था तो plants ही examine करेगा। Correct? So when he examined all the plant specimen, you know what he found? He found that plants are made up of cells. Plants सारे के सारे cells से बने हुए बच्चों। Okay, let me draw it and show you. ये देखो, ये प्लांट्स थे यहां पर, ये सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं। इतने बड़े बड़े सेल्स नहीं होते प्लांट में। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। दिखाई दे रहा है? सेल्स से बने रहते प्लांट्स। सो by looking at that, by seeing what the plants are made up of, he gave a concluding statement. Matthias Schleiden said that plants are made up of cells. All right, all plants are made up of cells. ये statement इन्होंने दिया. All right, next is the turn of a zoologist. Just a year later, okay, in 1839, a British zoologist called Theodore Schwann. Theodore Schwann. Now, this guy, being a zoologist, he examined mostly animal cells. Well, इन्होंने plants को भी examine किया, but then let's talk about his findings in animals first. All right. So Theodore Schwann examined different animal cells first. इन्होंने ढेर सारे animals को study किया, and then he came with a similar conclusion. You know what it is? He also gave a statement that all animals are made up of cells. All animals are made up of cells. चले आगे बच्चों, ये क्या है फिर? What is this? Well, Theodore Schwann did not stop there. Okay, just a year before him, आपको याद होगा, Matthias Schleiden ने अपना conclusion दिया था, and then in 1839 Theodore Schwann came up with his own conclusions. Correct? तो वो सब चीज को mix करके Theodore Schwann gave a few observations, okay, which were used later on for establishing a cell theory. We'll talk about the cell theory a little later. सबसे पहले Theodore Schwann ने क्या conclusions दुनिया को बताए? Let's talk about that. And before we venture out further into it, just let me remind you, बच्चों, ये 1838 का दौर है। कब का दौर है? 1838। अब तुम में से जितने लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जानते हैं, R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, तुमको पता है ना ये? Well, this system came in 1965. It is a very recent system, not the latest one, but 1965 में आया हुआ सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या है जानते हो बच्चों? In 1830s or 1840s, there were only 2 kingdoms. Everything is either a plant or an animal. If it has a cell wall, it is a plant. If it does not have a cell wall, it's an animal. All right. So 1830s में बच्चों, there was only 2 kingdom classification as it was given by Carlos Linnaeus. नाम तो तुमने सुना होगा, father of taxonomy, Carlos Linnaeus, याद है?
करेक्ट. सो बच्चों 1830s की बात है. इन लोगों के लिए दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आइदर इट इज एन एनिमल और इट इज अ प्लांट. सो व्हेन यू गेट टू सच स्टेटमेंट्स, ऑलराइट, दो ऐसे स्टेटमेंट मिल गए. एक बंदे ने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और दूसरे बंदे ने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. करेक्ट. इसका मतलब क्या है जानते हो? ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव गॉट कवर्ड. दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स कवर हो गए, है ना? तो क्लासिफिकेशन ही टू किंगडम सिस्टम चल रहा है. एवरी ऑर्गेनिज्म इज आइदर अ प्लांट और एन एनिमल. अब एक बंदे ने बोल दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दूसरे ने कह दिया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो इसमें कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, है या नहीं? करेक्ट. ठीक है, वहां पे हम जाएंगे थोड़ी देर बाद. वी विल डिस्कस दैट पॉइंट वंस अगेन. पहले देखो कि थियोडोर श्वान ने क्या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया. When he studied animal cells, obviously since he was a zoologist, isn't it? So when he studied animal cells, he found out that animal cells have a thin outer layer which is called as the plasma membrane. A thin outer layer called as the plasma membrane, also known as the cell membrane, also known as plasma lemma. All right. Well, students, एनिमल सेल्स के अलावा थियोडोर श्वान की प्लांट्स में भी कुछ फाइंडिंग है. उन्होंने मैथायस श्लीडन के क्लेम को कंफर्म करने के लिए प्लांट्स को भी जब ऑब्जर्व किया, ही फाउंड आउट that even outside the plasma membrane or the cell membrane, there is something called as cell wall in the plants, which is unique to the plant cells. Cell walls are unique to plant cells बताने वाला थियोडोर श्वान है, एक zoologist जिसने प्लांट्स के बारे में ये स्टेटमेंट मारा. आपको बात समझ में आई? You know, this can be a tricky question कि किसने बताया कि सेल वॉल is unique to plant cells? Who said this? ऑप्शंस में आपको मैथायस श्लीडन भी आएगा और दिमाग में भी आपको मैथायस श्लीडन आएगा because he is a botanist and the question is about plants. Well, don't get confused. All right, be clear in your head. Okay, कि यहां ये जो zoologist है इसने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की. सबसे पहली वाली प्रेडिक्शन, all animals are made up of cells. Secondly, the animal cells have a thin outer layer called plasma membrane. And thirdly, इनका एक स्टेटमेंट प्लांट्स में भी है, वो ये है कि cell wall is unique to plant cells. Get the point? तो जब ये स्टेटमेंट आ गया, मैथायस श्लीडन का स्टेटमेंट आ गया, तो using both the statements, such a hypothesis was framed, saying that animals and plants are composed of cells and the products of cells. लिख लो. Okay, मैथायस श्लीडन जो थे, okay, if you want the spelling, I'll just take you there. लिखते लिखते चलो बच्चों, मेरे साथ लिखते लिखते चलो. मैं तुमको मैथायस श्लीडन पे ले जाता हूं. ये लो, लिखो. 1838, मैथायस श्लीडन, बॉटनिस्ट, एग्जामिन्ड प्लांट्स, और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. आर यू डन राइटिंग? चले आगे. नेक्स्ट, 1839, थियोडोर श्वान, zoologist, examined animals and he also gave his own conclusion. नाम लिख लो, here लिख लो. What were his learnings or findings? All animals are made up of cells. समझा? Okay, ये पहला conclusion है थियोडोर श्वान का. Apart from that, he had 3 other statements to make. लिखिए, don't waste time. पहला वाला statement, animal cells have a thin outer layer called, or thin outer covering called plasma membrane. Then
a statement with respect to plants as well. It says that the cell wall is a unique part of plant cells. All right, or the unique covering of the plant cells. Plant cells में cell membrane के बाहर cell wall होता है, and that feature is missing in animals. All right, and last but not least, the third statement, which says animals and plants are composed of cells and the products of cells. समझा, लिखा, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ऑलराइट बच्चों, तो अब इन स्टेटमेंट्स को यूज करके हम सेल थ्योरी बनाने वाले हैं. लेकिन उसके पहले एक सवाल आता है दिमाग में, हाउ डू न्यू सेल्स अराइज? ये सेल आता कहां से है? वेयर डज सेल कम फ्रॉम? दोनों बॉटनिस्ट और zoologist, both started thinking. एक ने बोला all plants come from cells और all plants are made up of cells. दूसरे ने कहा कि all animals are made up of cells. अब दोनों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, अतामाजी सटकली, करेक्ट? दोनों को सवाल आ रहा है. क्या सवाल आ रहा है दोनों को? कि ये सेल आता कहां से है यार? ठीक है, they are made up of cells, but where did this cell come from? So there was another scientist, let me name him, and it is Rudolf Virchow. Okay, Rudolf Virchow. Okay, ये मुझे अभी दौड़ा रहा है. देखो, पहले मैं यहां खड़ा था तो वो वहां पे आया, फिर मैं वहां चला गया तो फिर वो यहां पे आ गया. देखो ऐसे कर रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसने दुनिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, एंड दैट इज omnis cellula e cellula. ऑलराइट, यहां पे एक सेलुला मिसिंग है, मैं उसको लिख देता हूं, डोंट वरी. omnis cellula e cellula, इसका मतलब क्या होता है? लिख लो, रूडोल्फ वर्खाव. स्पेलिंग चाहिए? दे रहा हूं. So this is Rudolf Virchow. Okay, Rudolf Virchow, and the sentence he gave was omnis cellula e cellula. Okay, which means all cells arise from pre-existing cells. जो भी सेल है, नजर आ रहा है यहां पे कुछ सेल्स है, all cells come from some pre-existing cell. पहले कोई तो सेल था जिसने बाद में और सेल्स बनाए. So all the cells in the world come from pre-existing cells. समझा बच्चों? यहां पे वही लिखा हुआ है, all cells arise from pre-existing cells. चलूं आगे? ठीक है. So रूडोल्फ वर्खाव ने सवाल का जवाब दे दिया. Matthias Schleiden, Theodor Schwann, both had questions के ठीक है भाई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, क्योंकि 1830s में किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, दो ही किंगडम थे. तो जब कह दिया कि ये भी सेल से बना है वो भी सेल से बना है, मतलब सारी दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए. करेक्ट? सो व्हेन सच अ स्टेटमेंट वाज मेड, देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन कि यार ये सेल आता कहां से है. ओके, so to add to the statement of both these gentlemen, Rudolf Virchow contributed. All right, बच्चों, so let's see what their statement was. इनका statement था all living organisms are made up of cells, right? Okay, but then Rudolf Virchow added to it by saying that all cells arise from pre-existing cells. लिख लो बच्चों, ये cell theory है. This is the cell थ्योरी. सेल थ्योरी के दो स्टेटमेंट्स है. कौन से दो स्टेटमेंट्स? लिख लीजिए. All living organisms are made up of cells. This is the first statement. Second one says that all cells arise from pre-existing cells. क्लियर बच्चों? सेल थ्योरी आपको समझा? सेल थ्योरी में किस किस का कंट्रीब्यूशन है? तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन है. कौन है वो तीन लोग? हैंग ऑन, आई विल जस्ट शो यू. सो वो तीन लोग है
Schlitten, Schwann and Virchow. ऑलराइट, चलें फिर आगे, चलते हैं सेल थ्योरी से थोड़ा और आगे. ओके, कुछ organisms है, there are few organisms which are an exception to cell theory. They do not follow cell theory. जैसे के viruses. Alright, मेरे बच्चों, viruses externally they don't look like a cell, externally do not look like cells, internally भी cellular organization उनमें नहीं देखा गया है. तो वायरसेस बहुत बुरी तरह से सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शनल है. ना ये एक्सटर्नली सेलुलर है ना इंटरनली सेलुलर है. समझा आपको? और भी कोई एक्सेप्शंस है क्या? यस माय डियर फ्रेंड्स, बैक्टीरियल cells compared to viruses are less of an exception because they do have a cell, yes, but this cell is not like a typical cell. All right, so externally, yes, they somewhat look like cells, but internally even they miss all the structures that a cell is supposed to have, right? Eukaryotic cell के सारे structures इसमें missing रहते हैं bacterial cells में. Understood? आगे चलें. Well, next exception to the cell theory are the fungi. Fungus दिखाई दे रहा है आपको? Mushrooms. Correct, not the mushrooms specifically, but mostly fungi belonging to phycomycetes group. फाइकोमाइसेट्स नाम का एक ग्रुप है, उसको बिलोंग करने वाले सारे फंगस जो है ना, एक्सटर्नली तो सेल्स दिखाते हैं बट इंटरनली दे आर नॉट डिवाइडेड. उनमें कोई पार्टीशन नहीं होता, एक कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म होता है बिना पार्टीशन के. ऑलराइट, एक लंबी पाइपलाइन होती है जिसमें कोई पार्टीशन नहीं होते. नॉर्मली सेल्स पार्टीशन से बनते हैं ना. ओके, दो नेबरिंग सेल्स के बीच में पार्टीशन होना चाहिए ना, वहां ऐसा नहीं होता. द साइटोप्लाज्म इज कंटिन्यूस, ऑलराइट, इन द फंगल हाइफे. देयरफॉर we say that fungi are also an exception to the cell theory. All right, और इसका classic example है mucor which belongs to phycomycetes. चलें आगे बच्चों. So ये कुछ cells का sizes देखिए इस chart में. Okay, unaided vision यानी डायरेक्ट अगर आप naked eyes से किसी सेल को देखा है कभी आपने? Have you ever seen a cell through your naked eyes? बच्चों, अंडा जो देखा ना, अंडा, एग, a hen's egg जो 6.5 सेंटीमीटर का होता है, करेक्ट, 65 mm. well, what is that? That's an egg. और दुनिया का सबसे बड़ा सेल is ostrich का egg. You know the bird ostrich, right? Yes, don't fight with it if you come across an ostrich. बहुत चोच मारेगा. So ostrich जो होता है ना, एक बहुत ही बड़ा बर्ड होता है और उसका अंडा अराउंड 2.5 किलो का होता है. जितना सनी देओल का हाथ होता है उतना ही वजन का ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, राइट? सो दैट्स अ वेरी 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 बिग सेल. ऑलराइट, एंड द नॉर्मल एग्स दैट वी get around in the grocery shops that we use for making omelets and various the scrambled eggs and all those things, well, that you can see through your naked eyes, isn't it? तो आप सेल अपनी आंख से देख सकते हो. गलत फहमी में मत रहना कि सेल आंखों से दिखाई नहीं देता. अगर वो बड़ा सेल है तो क्यों दिखाई नहीं देगा? हाँ, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? सेल तो दिखाई देता है, अंडा दिखाई देता है और अंडा एक सेल है. क्लियर? Long back, I was in a debate with a physics graduate, okay, and he had no idea about the egg being a cell, single cell. वो उल्टा बोल रहा था इतनी बड़ी चीज है उसके अंदर सेल्स होंगे. ना, अंडा खुद एक सेल है, एक सेल. राइट, बात दिमाग में बैठा लो. अंडा, egg is one single cell. Even if it is the ostrich's egg, this big in size, still it is one cell. All right. सो एग. फिर इसके बाद देखिए प्लांट सेल. साइज देखिए प्लांट सेल का, टिपिकल प्लांट सेल 10 to 100 माइक्रॉन्स इन साइज. ऑलराइट, फिर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियन को जो साइज है, द सेल ऑर्गेनल्स आर ऑफ द सेम साइज एज अ बैक्टीरियल सेल. दिखाई दे रहा है? 2 to 10 म्यू, 1 to 5 म्यू. देखो 1 to 5 म्यू. बैक्टीरियल सेल का साइज और माइटोकॉन्ड्रियन का साइज सेम है ना. So a cell without nucleus is of the same size as an organelle present in a cell with nucleus. Okay, a prokaryotic cell is of the same size as the organelles present in a eukaryotic cell. दिमाग में बात गई? पक्का लिख लिख के चल रहे हो? Okay.
What is this? This is Trypanosoma gambiensis, African sleeping sickness cause करने वाला प्रोटोजोन है ये. Size दिखाई दे रहा है 25 microns. All right, this is way larger than a bacteria. Okay, even larger than human RBCs. So this is a protozoan which causes the disease called African sleeping sickness. ये अगर आपके बॉडी में आ गया ना और उसके बाद दिमाग में जाके इसने घर बना दिया ना, तो ये आपका सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दिमाग में से ले लेगा एंड यू विल फील स्लीपी एंड स्लीपी एंड स्लीपी एंड स्लीपी. ओके, लेट्स नॉट स्लीप हियर. उम्मीद है आप चीजें लिख कर ले रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो. दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव. एज यू कैन सी, एक मुर्गी का अंडा, मुर्गी पहले आएगी, अंडा पहले आया, बाद में देखेंगे. अंडा मेरे सामने इधर है. अंडे का साइज 65 mm, which is 6.5 centimeters. Plant cell का size 10 to 100 mu or microns. Then we have Trypanosoma, which is a protozoa. You know what this is? This is a neuron. Neuron cells are 70 microns in width, but they could be as long as 1 meter. एक न्यूरॉन का लेंथ 1 मीटर भी हो सकता है बच्चों. यहां से स्टार्ट होके एकदम नीचे तक जाएगा. ओके, बेयर इन माइंड. लॉन्गेस्ट सेल्स में नाम आता है न्यूरॉन्स का. ओके, सो नॉट ऑल न्यूरॉन्स आर दैट लॉन्ग, बट you know, if you were to pick long, a list from a list of long cells, neurons could be one of them. All right, so neurons this size. Then we have RBCs. Okay, a cell which is our cell without a nucleus. Mature होते होते अपने RBCs nucleus खो बैठते हैं. All right, चलते आगे. Why do they do that? To carry oxygen. To be able to carry oxygen, they get rid of all the parts which are not required. Okay, न्यूक्लियस खो बैठते हैं और बहुत सारी चीजें खो बैठते हैं और ऑक्सीजन बहुत मजे से कैरी करते हैं, पूरे बॉडी को सप्लाई करता है. नेक्स्ट इज व्हाट? ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, बैक्टीरिया, एंड वी हैव यूनिसेलुलर एल्गे. ओके, क्लमाइडोमोनास. क्लमाइडोमोनास. सो यूनिसेलुलर एल्गे आर बिगर देन बैक्टीरिया. कैन यू सी? एंड देन इन सबसे छोटा न्यूक्लियस वाला सेल, ये सारे, फिर ये बिना न्यूक्लियस का यानी कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स से भी छोटे सेल्स कौन से है बच्चों? आई मीन एक सेल है, दिखाता हूं तुमको. ये देखो, दिस इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. ओके, माइकोप्लाज्मा, इन्हें हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट, सो these mycoplasmas are very small in size. Okay, as small as 0.3 mu, 0.3 microns. देखो, एक एवरेज बैक्टीरिया का साइज होता है 1 to 5 microns. 1 माइक्रोन से भी छोटा है ये, दिख रहा है आपको? एक एवरेज साइज बैक्टीरिया 1 to 5 माइक्रॉन्स में है, तो ये इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. ऑलराइट, so these pleuropneumonia like organisms, PPLO, belonged to the genus Mycoplasma. All right, my dear friends, तो दुनिया का सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा है. ओके, अब तुम बोलोगे सर ये इमेज में कुछ नहीं दिख रहा है. अरे भाई, है ही उतना छोटा, कहां से दिखेगा? बट दिमाग में एक बार डाल लो कि वो एक सेल है. इट्स अ सेल व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. ऑलराइट मेरे बच्चों, अब चलो सेल से छोटा क्या हो सकता है? यहां तक सारे सेल्स है. सेल से छोटे होते हैं वायरसेस. सेल से ज्यादा छोटे होते हैं वायरसेस, व्हिच आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. आई होप यू रिमेंबर, वायरसेस डू नॉट फॉलो द सेल थ्योरी, राइट? उनमें सेल जैसा कुछ नहीं होता. दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स ओनली. नजर आ रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस, इट इज अ प्लांट वायरस. एंड हियर यू हैव T4 बैक्टीरियोफेज. ये बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस है. बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. प्लांट सेल को अटैक करने वाला वायरस दिख रहा है, टोबैको मोज़ेक वायरस. एनिमल वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, करेक्ट, कॉजेस एड्स इन अस, राइट? सो HIV, इवन कोरोना वायरस, अगर आपको पता है, किसको नहीं पता कोरोना वायरस? दुनिया को घर पे बिठा दिया 2 साल के लिए, करेक्ट? वेल, दैट कोरोना वायरस, इवन पोलियो वायरस, all of them are viruses which affect animals
स्पेशली ह्यूमन बींग्स। ये हमारी लिस्ट में जो है ये सब ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करने वाले वायरसेस। ऑलराइट बच्चों, तो ये और भी ज्यादा छोटे होते हैं वायरसेस। कैन यू सी, इनका साइज नैनोमीटर्स में दिया हुआ है। 100 नैनोमीटर्स, 30 नैनोमीटर्स, 225 नैनोमीटर्स, 300 नैनोमीटर्स। अच्छा, वायरसेस से छोटे क्या होता है? वायरसेस से छोटे अब सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, जैसे कि डीएनए, 2 नैनोमीटर्स इन थिकनेस। अंडरस्टूड बच्चों? डिड यू अंडरस्टैंड दिस साइज चार्ट? एंड डिड यू सी द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड? माइकोप्लाज्मा, करेक्ट। और इससे छोटा कोई सेल नहीं होता। इसके बाद सिर्फ वायरसेस होते हैं। ऑलराइट बच्चों, अब कुछ सेल्स के शेप्स देखते हैं हम लोग। Cells like red blood corpuscles could be discoid, round and biconcave in shape. Okay, round and biconcave, दो तरफ से कॉन्केव है। देखो, दिख रहा है? यहां से भी कॉन्केव है, ऊपर से भी कॉन्केव है, दिखाई दिया? So they are round and biconcave in shape. समझा? कोई भी एक बॉल को ले लो और ऐसे अंदर की तरफ प्रेस कर लो, बाइकॉन्केव शेप का हो जाएगा। राउंड तो वो है ही, और बाइकॉन्केव भी हो जाएगा। करेक्ट? That's what I'm talking about. That's how it, the RBCs look like. समझा? काश ऐसा हमारे साथ पॉसिबल होता कि हम भी ऐसे बाइकॉन्केव हो सकते। नहीं पॉसिबल है। यहां से कॉन्केव है और यहां से सारा कॉन्वेक्स निकला हुआ है। जस्ट जोकिंग। सो वर्कआउट से वो भी पॉसिबल है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसका एग्जांपल आई मीन द शेप दैट दे पोजेस इज अमीबॉइड। ये किसी भी शेप के होते हैं। ओके, दे कुड बी ऑफ मल्टीपल शेप्स। बच्चों, मेरा एक क्लासमेट मुझे याद आता है। ओके, एक क्लासमेट हुआ करता था मेरा, चेतन जोशी, एंड ही यूज्ड टू ड्रॉ एन एलिफेंट। एक एलिफेंट बनाता था वो, और मुझे पूछता था कि ये क्या है। आई यूज्ड टू टेल हिम एलिफेंट है करके, एंड यू नो व्हाट ही यूज्ड टू से? नहीं, ये अमीबा है। अब मैं उसको रॉन्ग भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अमीबा कैन टेक एनी शेप, राइट? अमीबा एलिफेंट शेप का भी हो सकता है। वेल, यहाँ पे हम अमीबा की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की बात कर रहे हैं, विच कुड बी अमीबॉइड इन शेप। राइट बच्चों, आगे चले। सो देन फर्दर अप वी हैव कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, जो कि ऐसे लॉन्ग और नैरो सेल्स होते हैं, कॉलम्स के जैसे। फर्दर अहेड वी हैव नर्व सेल्स, ऑलराइट, जो कि ब्रांच्ड है। एंड देन ट्रकीड. व्हाट इज अ ट्रकीड? प्रिमिटिव जाइलम. Okay, elongated cells with tapering ends. Elongated cells with tapering ends. Let me show you such a shape. ये एक बॉटल है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? ये एक बॉटल, तो दिस इज एन elongated thing with the end is tapering. दिख रहा है? tapering end, correct, perfect. So it's an elongated cell with tapering ends on both the sides. बॉटल में एक साइड टेपरिंग था, यहाँ पे दोनों साइड्स टेपरिंग, एंड दिस इज प्रिमिटिव जाइलम. ओके, प्लांट्स में जानते हो ना, जाइलम जो पानी ऊपर चढ़ाता है, दिस इज जाइलम, प्रिमिटिव जाइलम. मॉडर्न जाइलम को हम ट्रकिया कहते हैं, वो ऐसे विद टेपरिंग एंड्स नहीं होता. विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर लेक्चर. ऑलराइट, ये क्या है? मीसोफिल सेल्स, सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ लीफ. यस, दे आर राउंडेड एंड ओवल सेल्स. ओके, ऐसे राउंडेड एंड ओवल सेल्स भी होते हैं, लीव्स में देखे जाते हैं हम. ओके, स्पॉन्जी मीसोफिल, पैलिसेड मीसोफिल, दे आर राउंड एंड ओवल. चले आगे. तो ये सारे शेप्स है बच्चों, लिख लो, ठीक है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, राउंड एंड बाइकॉन्केव, साइज इनका 7 म्यू तक हो सकता है कभी कभी. व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स व्हिच आर अमीबॉइड इन शेप, columnar epithelial cells which are long and narrow. Here we have nerve cells which could be branched, and then trachea or primitive xylem which is elongated with tapering ends. Further ahead we have mesophyll cells. Meso माने middle, fill माने leaf. Mesophyll cells यानी leaf के middle वाले cells, leaf के अंदर वाले cells. Understood? And what shape do they have? Round and oval shape. Alright, चलो आगे बच्चों. और मैंने आपको बताया था कि नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं वंस इन अ व्हाइल. ऑलराइट, कोई कोई नर्व सेल्स 1 मीटर जितने लंबे हो सकते हैं. वेल, एक सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है? एक सेल का शेप किस किस टाइप का हो सकता है? एक सेल का साइज किस किस टाइप का हो सकता है? वी आर डन विद द साइजेस एंड द शेप्स ऑफ द सेल्स, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. वन, as you can see, with nucleus, the other type of cell without nucleus. जो with nucleus है हम उसे यूकैरियोटिक कहते हैं,
यू माने ट्रू और कैरियन माने न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक यानी सेल्स विद ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक यानी सेल्स विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस और नो न्यूक्लियस। राइट, इनका एक डिफरेंशिएट बिटवीन बनाएंगे अभी हम लोग। आप लोग ऐसे एक पेज के ऊपर एक जगह लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक, एक जगह लिख लीजिए यूकैरियोटिक, और दोनों के पॉइंट्स अभी उनके नीचे आते जाएंगे, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज कॉपी इट डाउन, alright, and remember it as long as you can. It's easy. So prokaryotic cells are simple, eukaryotic cells are complex. Alright, further ahead, prokaryotic cells may nucleus is not well organized, whereas eukaryotic cells may the nucleus is well organized. Prokaryotic cells में chromosomes कितने होते हैं बच्चों? एक, one chromosome. Can you see this here? One single chromosome in prokaryotic cell. दिखाऊं ड्रॉ करके? ये देखो, दिस वन इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक सेल में मेनी क्रोमोसोम्स. ओके, व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? There is no nuclear membrane in prokaryotes, so it is absent, and there's a nuclear membrane. Can you see around the nucleus? यहाँ पे membrane bound nucleus है. Yes, there is a nucleus present in eukaryotes, and that's the reason why they are called eukaryotes, right? Well, membrane bound organelles like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, ये सब कुछ eukaryotes में present है. Look at this, look at this. This is the endoplasmic reticulum. नजर आ रहा है आपको? Blue in color. This is the endoplasmic reticulum. This is the Golgi apparatus. Even this is endoplasmic reticulum. Here we have mitochondria. और ये बीच में न्यूक्लियस. So many things बच्चों. प्रोकैरियोटिक सेल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर है. उल्टा कहा मैंने, माय बैड. यूकैरियोटिक सेल एक कंपार्टमेंटलाइज्ड सेल है. प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड एट ऑल. काफी सिंपल सा सेल है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, माय डियर फ्रेंड्स, are present in a eukaryotic cell, whereas in a prokaryotic cell membrane bound organelles are absent. क्योंकि एवोल्यूशन की एक स्टोरी के हिसाब से ऐसा कहते हैं, जिसे कहा जाता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जिसके अनुसार these prokaryotic cells came together, these cells without a nucleus, they came together and they made a cooperative housing society called as a eukaryotic cell. कुछ समझा? क्या समझा? एक थ्योरी है एवोल्यूशन की कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जिसके अनुसार सच प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओके, autotrophic, heterotrophic, such prokaryotic cells came together, started living together, got enclosed within a bigger membrane, in a bigger surrounding, and gave rise to a eukaryotic cell. All right, बच्चों? So that is a theory. ओके, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं एवोल्यूशन की थ्योरी. अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है तो आप टेंशन मत लो, बट देन यू शुड नो कि यूकैरियोटिक सेल आए कहां से. मेनी सच प्रोकैरियोटिक सेल्स केम टुगेदर एंड गिव राइज टू अ यूकैरियोटिक सेल. ऑलराइट, चले आगे. सो लेट्स गेट इनटू अ प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, सीधा सीधा प्रोकैरियोटिक सेल में जाते हैं. प्रो का मतलब होता है बिफोर या प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सेल विदाउट अ न्यूक्लियस, और विद अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हो, जिसमें डीएनए तो तुमको दिख रहा है बट देयर इज नो मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट, देयर इज नो प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इट. ऑलराइट, सो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और इसके शेप्स बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. कैन यू सी? रॉड शेप्ड हो सकता है, हम इसे बैसिलस कहते हैं. ओके, बहुत सारे बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया हम जानते हैं. लैक्टोबैसिलस, दही खाया कि नहीं कभी तुमने? दूध के अंदर दही डालो तो पूरा दूध दही बन जाएगा, करेक्ट? तो वो जो इनिशियली तुम दही डालते हो और बाद में जो सारा दही बन जाता है, वो क्या है? व्हाट इज इट? व्हाट इज दही? व्हाट इज कर्ड? इट इज अ बैक्टीरिया called as lactobacillus. All right, so size 3 to 5 mu. Further ahead, bacteria could be spherical like this, they could be rounded or spherical. We call them as coccus. अगर वो रॉड शेप बैक्टीरिया है हम बैसिलस कहते हैं. देखो नाम में भी लैक्टोबैसिलस है.
अगर वो गोल गोल बैक्टीरिया है वी कॉल इट कोकस। देखो नाम में भी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। गेस व्हाट इट कॉजेस? निमोनिया, राइट? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस इज बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज स्पियरिकल, ओके, कोकस यानी स्पियरिकल बैक्टीरिया। फिर कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे कॉमा शेप का भी होता है, नजर आ रहा है आपको? इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग ऐसे कॉमा लिखते हैं ना बच्चे, कॉमा ऐसा लिखते हैं ना, कॉमा, करेक्ट? ये उसी शेप का, देखो ये सारे कॉमा शेप बैक्टीरिया है, कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया, दिखाई दिया? सो दीज कॉमा शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज व्हाट? विब्रियो, okay? So a very notorious bacterium comes from this group, Vibrio cholerae, causes diarrhea and cholera, all right? So love in the time of cholera was not that pleasant, okay? Vibrio cholerae causes cholera. So बहुत ही एजाइल बैक्टीरिया बच्चों, मैंने इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा हुआ, ऐसे टैव 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 डांस करते रहता है। सो नेक्स्ट इज व्हाट? स्पाइरल, दिख रहा है आपको स्प्रिंग के जैसा? या सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्पाइरलम, प्लूरल स्पाइरला, जैसे विब्रियो, प्लूरल विब्रियोस। सो ट्रेपोनीमा पैलिडम, इट कॉजेज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉल्ड सिफिलिस। और ये बहुत बड़ा बैक्टीरिया है, आप देख सकते हो। कैन यू इमेजिन द साइज? ग्रेटर देन 10 microns, which is even larger than the red blood corpuscles in us. याद है अपने आरबीसी 7 microns थे। And these bacterial cells, okay, बैक्टीरिया है वो बच्चों, प्रोकैरियोट्स है, still look at the size, 10 microns से भी ज्यादा, okay, causes an STD called syphilis. So ये 4 शेप के बैक्टीरियल सेल्स मैंने आपको बताया। बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड होता है, कोकस जो कि स्पियरिकल होता है, विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड होता है, एंड देन स्पाइरलम जो कि स्पाइरल होता है, स्प्रिंग के जैसे। ऑलराइट बच्चों, चले आगे। What else do we have to learn about a bacterial cell? Oh, the cell envelope. This is a typical bacterial cell in the image. वैसे बैकग्राउंड में भी यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स ही चुने हुए हैं और सारे के सारे रॉड शेप्ड है। दिख रहा है तुमको ये वाला बैक्टीरियल सेल रॉड शेप्ड? हाँ, ये देखो ये वाला बैक्टीरियल सेल रॉड शेप्ड, ये देखो ये वाला, ये देखो ये वाला, करेक्ट? ये सारे बैकग्राउंड में जो बैक्टीरियल सेल्स है सारे के सारे रॉड शेप्ड है। इवन दिस बैक्टीरियल सेल इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया, करेक्ट? ये सारे बैक्टीरियल सेल्स रॉड शेप्ड है। बताओ इसका नाम क्या होगा? कोकस ना, करेक्ट है? ये एक दूंगा, कोकस स्पियरिकल होते हैं, इन्हें बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस। ऑलराइट, जस्ट बेयर दैट इन माइंड। लैक्टोबैसिलस वाज एन एग्जांपल, आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन। और 11th-12th स्टैंडर्ड में तुम एक और बैक्टीरिया का नाम सुनोगे, बैसिलस थुरिंजेंसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है तुम्हारे लाइफ का। ऑलराइट, आज मैं सारा सस्पेंस नहीं खोलूंगा उसके बारे में, बट बैसिलस थुरिंजेंसिस बायोटेक्नोलॉजी में इतना 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 यूजफुल है कि हमें पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करने पड़ते उसकी वजह से। ओके, वी हैव चेंज्ड द गेम ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया। ओके, इतना बोल के छोड़ता हूं, आगे चलता हूं। So for any bacterial cell, मेरे बच्चों, for any bacterial cell, as you can see here, the outermost covering is the cell envelope. Okay, for any bacterial cell, there is an outermost covering called cell envelope. Plus, there are some rounded structures in the cytoplasm, which we call as cytoplasmic inclusions, which are present in the cytoplasm fluid matrix. अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म फ्लूइड मैट्रिक्स, और उसमें फ्लोट होने वाली राउंडेड चीजों को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ऑलराइट, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। कैन यू सी एन इनवैजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? अब इनवैजिनेशन का क्या मतलब होता है? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, देखो, लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर जाके ऐसे फोल्ड होने लगा, दिख रहा है? सेल मेम्ब्रेन ऐसे इनवैजिनेट हो गया अंदर की तरफ, दिखाई दे रहा है? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ गया है, दिखा ना?
Well, this invagination of the cell membrane, my dear friends, is called mesosome. Invagination of the cell membrane is called mesosome. All right. Meso माने मिडल, सोमा माने बॉडी. सेल के मिडल में एक अलग सा बॉडी जैसा दिख रहा है, उसे हम कहते हैं मीसोसोम. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इट इज एन इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड यू विल सी सच मीसोसोम्स ओनली इन प्रोकैरियोट्स. आपको यूकैरियोट्स में मीसोसोम नाम की चीजें नहीं दिखेंगी. राइट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ carrying out bacterial respiration. It has so many enzymes that many processes which are vital for the life of a bacteria are carried out on this same infolding called as mesosome. All right. Mesosome के types वगैरह भी है, लेकिन हम वो नहीं स्टडी करेंगे अभी फिलहाल. वो थोड़ा ज्यादा ही एडवांस हो जाएगा तुम्हारे लिए. And I hope you remember that we had discussed about this कि bacterial cells have one single chromosome, correct? One single it does not have any well-defined nucleus. Okay, so there is only one chromosome which is naked. It is present without a covering. Correct. इस chromosomal DNA को हम usually nucleoid कहते हैं. Nucleoid लिख लो बच्चों. One single chromosome which is circular and it carries out all life processes. So this bacterial chromosome is called as nucleoid. Nucleoid. Oid का मतलब होता है like. अगर मैंने कहा तुम अमीबॉइड हो, इसका क्या मतलब है? यू आर अमीबा लाइक. अगर मैंने कहा जूऑइड हो, इट मींस यू आर एनिमल लाइक. तो अगर मैंने कहा न्यूक्लियोइड है ये, इसका मतलब इट इज न्यूक्लियस लाइक. याद रखोगे? लिख लिया. सो बैक्टीरियल सेल्स हैव सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम which controls all the life processes, and this chromosome is called as nucleoid. ऑलराइट बच्चों, चलते हैं आगे. क्रोमोसोम के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हमने बायोटेक्नोलॉजी में इसे भी एक्सप्लॉइट करना सीख लिया है. इट इज कॉल्ड एज प्लास्मिड. प्लास्मिड इज नथिंग बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. अपार्ट फ्रॉम द क्रोमोसोम, प्लास्मिड इज देयर. अभी प्लास्मिड भी डीएनए और क्रोमोसोम भी डीएनए. सो व्हाई इज प्लास्मिड नॉट कॉल्ड एज अनदर क्रोमोसोम? That's because plasmid पे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए सारा इंफॉर्मेशन नहीं होता, एंड प्लास्मिड मे बी देयर और मे नॉट बी देयर, बट क्रोमोसोम हैज टू बी देयर. Okay, for a bacteria to live, it can survive without a plasmid, but it cannot survive without a chromosome, right? तो उसके सारे लाइफ प्रोसेसेस कंट्रोल करने का इंफॉर्मेशन जो है ना, यू नो, द इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल ऑल द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ अ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम बट नॉट प्रेजेंट ऑन प्लास्मिड. सो व्हाई आर दीस प्लास्मिड्स देयर? ये प्लास्मिड किस काम के? ना काम के, ना काज के. क्या ये दुश्मन अनाज के? ना. प्लास्मिड्स bear genes for other functions which are necessary for survival, like antibiotic resistance. Sometimes microorganisms, in order to kill each other, they release antibiotics, and to save themselves they have such genes which are present on plasmids. All right, so antibiotic resistance genes are usually present on plasmids. So what is a plasmid? लिख के ले लो. Extra chromosomal DNA है, small in size, circular in shape, and it has additional phenotypic characters. Life को कंटिन्यू करने के लिए जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स चाहिए वो सारे क्रोमोसोम्स पर है, बट एक्स्ट्रा और एडिशनल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन प्लास्मिड्स. ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सो फर्दर अप व्हाट डू वी हैव? सो प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका सेल एनवेलोप हम देख रहे हैं वापस से. सेल एनवेलोप में तीन लेयर्स है. ओके, सेल एनवेलोप ऐसा सिंगल लेयर वाला एनवेलोप नहीं है. It has 3 layers. Okay, first of all, it is complex. Second, it serves as a protective barrier. It controls things that can come in and then go out of the cell. Okay, and then it also helps in chemical exchange. Okay, सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर चीजें आने जाने में कौन मदद करता है? It is the cell envelope which does it. Alright, और ये envelope जैसे मैंने बताया था आपको कॉम्प्लेक्स है. कैसा है? कॉम्प्लेक्स. इसके 3 लेयर्स है. सबसे बाहर वाला लेयर ग्लाइकोकैलिक्स. द नेक्स्ट लेयर इज द सेल वॉल, एंड द लेयर इनर टू द सेल वॉल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
तो सबसे बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हैव अ क्लोजर लुक एट दीज थ्री लेयर्स. देखिए ये बाहर का लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, then we have the cell wall and then we have the plasma membrane. Well, मैं इसमें बहुत सारी बातें कर सकता हूं आपके साथ, जैसे कि ग्लाइकोकैलिक्स आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, cell wall cell wall is made up of peptidoglycan and sometimes म्यूरामिक एसिड. बहुत सारी चीजें, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा आपके लेवल पे. ओके आपका लेवल बहुत बेसिक है, मुझे आपके फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, फाउंडेशन बनाना है, बिल्डअप करना है. तो इतना ही याद रखिए कि बैक्टीरियल सेल एनवेलोप इज नॉट सिंपल, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑफ थ्री लेयर्स. आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, next layer is cell wall and the layer inner to it is plasma membrane, cell membrane. Okay, in fact ये cell wall के वजह से ही 1830s और 50s में बैक्टीरियल सेल्स को डाल देते थे किंगडम प्लांटे में. समझा? आपको याद होगा मैंने कहा था एनीथिंग दैट हैज अ सेल वॉल हैज टू बी अ प्लांट. करेक्ट? ये तब का रूल था, अब का नहीं है. ओके अब इनको एक अलग किंगडम बना के दे दिया है, मोनेरा. उसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, बट मैं वो डिटेल में जाने वाला नहीं हूं. ऑलराइट, चलते हैं आगे मेरे बच्चों. सो कभी कभी बैक्टीरियल सेल्स में फोटोसिंथेसिस के लिए यू मे हैव, आई मीन दे मे हैव, नॉट यू, दे, बैक्टीरियल सेल्स में हैव these structures called chromatophores which bear pigments and they are for photosynthesis. Okay, trapping sunlight, making food. All right, example blue green algae. All right बच्चों, चले आगे. So further let's talk about motility. Bacteria, in order to move, what do they use? Well, they have these structures. Can you see these hair-like structures, long structures? ये वाले, मैं इन hairs की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले hairs की बात कर रहा हूँ. These very long structures called flagella. Single flagellum, plural flagella. तो अगर किसी बैक्टीरियल सेल के पास फ्लैजेला है, it is a motile bacteria. Okay, ऐसे पानी में फ्लैजेला ऐसे यूज कर करके मूव करेगा. Okay, understood. Write it down somewhere. For motility, bacteria have these structures called flagellum, singular, plural, flagella. So if flagella are present, the bacteria is a mobile or it is a motile bacteria. Okay, and if flagella are absent, it is non-motile. All right, chale aage. So other structures on the surface, can you see these structures? इन्हें हम पाइलाई कहते हैं, पाइलाई. ओके, और थोड़ा बहुत फिम्ब्रिए के भी बारे में बात करेंगे, फिम्ब्रिए. ओके, so there are proteins, these are all made up of proteins and they are hair like appendages. इनके रोल भी अलग अलग है. Can you see? पाइलाई एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, देखो. और ये सारे फिम्ब्रिए हैं. फिम्ब्रिए का क्या रोल है अगले स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा. फिलहाल पाइलाई के बारे में जानो. So pili is plural for pileus. Okay, pileus helps in bacterial conjugation. दो neighboring bacteria जब एक दूसरे के पास आ जाए, okay, and they are, if they are of different types, they may exchange genetic material. उनके बीच में genetic material exchange हो सकता है, just like sexual reproduction that takes place in us. हम कैसे sperm transfer करते हैं, gamete transfer करते हैं, उस तरीके से हमारा genetic material आगे pass on करते हैं. Bacterial cells pass on genetic material with the help of these proteinaceous pipeline or bridges, as you can say, you can call them as pili. Okay, single pileus, plural pili. और आपको याद है प्लास्मिड्स में मैंने बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं. प्लास्मिड क्या है? प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, लिख के लिया है ना आपने. Plasmids which are extra chromosomal DNA bear genes for additional phenotypes or additional functions like antibiotic resistance. Correct? किसी एंटीबायोटिक से बचने के लिए जो जीन्स रिक्वायर्ड है वो प्लास्मिड्स पे होते हैं ना. यस, और वही प्लास्मिड्स के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स get transferred through the pipe or through the pili to the other bacteria. मतलब for example अगर ये बैक्टीरिया किसी एक एंटीबायोटिक, let's say amoxicillin के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, बिकॉज इट हैज जीन्स फॉर दैट, राइट, इट कैन इजीली ट्रांसफर जीन्स फॉर amoxicillin resistance to this bacteria, and then what will happen? Even this bacteria will become amoxicillin resistant. समझा?
सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स और ऐसे बहुत सारे जीन्स ट्रांसफर होते हैं बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स विद द हेल्प ऑफ पाइलाई. दिस इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये उसका एक प्रीकर्सर है, आप कह सकते हो, जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म यहां पे भी है. ओके, सो इंटर स्पीशीज जीन ट्रांसफर किया जा सकता है एंड ट्रांसफॉर्मेशंस कैन टेक प्लेस. दिस बैक्टीरिया गिविंग इट्स जीन टू दिस बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया आल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज्ड. राइट, व्हाई? बिकॉज इट हैज रिसीव्ड द जीन्स फॉर इट. राइट, जीन्स मिल गया तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है. अंडरस्टूड. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिम्ब्रिए. ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं फिम्ब्रिए, ये अटैचमेंट में मदद करते हैं बच्चों. अटैचमेंट टू द होस्ट, किसी होस्ट को चिपकने में मदद करते हैं. अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा ना फिम्ब्रिए के बारे में, आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे कि आपके दांत जो होते हैं ना, दांत, उसके ऊपर कभी आपने एक थिन फिल्म बना हुआ देखा होगा. ओके, दिखाता हूं मैं आपको. दांत के ठीक ऊपर एक लेयर होता है. दांत के ठीक ऊपर देखो, ये आपका दांत है और ये उसके ऊपर एक लेयर है, दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे. ब्रश नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा. क्या होगा? ब्रश नहीं करोगे तो दांत पीले पड़ जाएंगे. क्यों पीले पड़ जाएंगे? वो पीला पीला क्या है बच्चों? ये पीले पीले, these yellow structures that you see, or this yellow layer on the teeth that you see, are bacterial cells. All right, and how do they manage to cling or to stick on to the shiny glossy teeth? Yes, my dear friends, the reason is fimbriae, these hair like structures. Do you remember? Fimbriae की मदद से bacterial cells are able to stick on to anything. Okay, they can attach themselves to the host with the help of those structures, those hair like structures called fimbriae. तो बच्चों, मैंने तुमको ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स दिखाए. सबसे पहले मैंने फ्लैजेला दिखाया जो कि स्विमिंग के काम आता है. करेक्ट. मोटिलिटी के काम आता है. करेक्ट. सेकेंड, फ्लैजेला तो बहुत लंबे लंबे थे. सेकेंड मैंने आपको पाइलाई दिखाए. करेक्ट. पाइलाई जीन ट्रांसफर के काम आता है फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर, and then the other bacterial cell will also get transformed. Yes or no? थर्ड, ढेर सारे फिम्ब्रिए दिखाए मैंने आपको, which help in attaching the cell to the host. Correct? अटैचमेंट के काम आते हैं. राइट. वेल, सम मोर स्ट्रक्चर्स. वैसे यूकैरियोटिक सेल क्यों सामने आ गया? क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है जो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल दोनों में कॉमन है. You know what that is? It is ribosome. All right. Ribosomes are non-membrane bound cell organelles which are common to both prokaryotic and eukaryotic cells. लिख के ले रहे हो ना? Ribosomes are present in both prokaryotic and eukaryotic cells. Well, just bear in mind कि दोनों के ribosomes अलग अलग टाइप के होते हैं. इधर 70S राइबोसोम होता है, उधर 80S राइबोसोम होता है. ये S क्या है और 70-80 क्या है? You can learn that in higher classes, not today. Today, write only this much कि prokaryotic cell and eukaryotic cells have these non-membrane bound, लिख लो, non-membrane bound organelles called ribosomes. Alright, so अभी इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड क्यों लिखा हुआ है? जब मैंने कहा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यहां जो लिखा है उसका मतलब समझ के लो. राइबोसोम के खुद के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. दैट इज व्हाट आई सेड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. और यहां पे लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड. इसका मतलब यह है कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके बच्चा लोग, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है ना, इसको राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं वंस इन व्हाइल. ओके, therefore this sentence which says ribosomes are plasma membrane bound, and then further ahead, sometimes they are free floating in the cytosol. कभी राइबोसोम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चिपके हुए मिलेंगे, कभी राइबोसोम आपको फ्री फ्लोटिंग मिलेंगे. देखो यहाँ पे ढेर सारे फ्रीली फ्लोटिंग है. देखो 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 देखो, यहाँ पे भी है, दिखाई दे रहा है आपको. एंड राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. ट्रांसलेशन नाम का प्रोसेस पूरा का पूरा राइबोसोम ही संभालते हैं बच्चों. राइट, चलें फिर आगे. देखो राइबोसोम्स यहाँ पे भी है फ्लोट करते हुए, और उसके साथ साथ कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी होते हैं बच्चों. ओके, विच आर नथिंग बट स्टोरेज ग्रैन्यूल्स फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म. आराम से ग्रैन्यूल्स कहीं ना कहीं फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, एंड मेम्ब्रेन बाउंड वो भी नहीं होते. वेल, राइबोसोम अलग और ये इंक्लूजन बॉडीज अलग. ओके, सो इंक्लूजन बॉडीज आपको बेसिकली 2 टाइप के मिलेंगे. यू विल फाइंड 2 काइंड्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. कौन से होते हैं लिखो?
organic inclusion bodies, okay, which could be of starch and glycogen granules, may be taken inside by the bacteria or maybe synthesized there itself if it is a photosynthetic bacteria. Inclusion bodies could also be inorganic in nature, okay, of phosphate and sulfate granules, which are useful for manufacture of DNA and proteins. ऑलराइट, तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के इंक्लूजन बॉडीज आपको साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते हुए मिलेंगे, किसके? बैक्टीरियल सेल्स के। ऑलराइट मेरे बच्चों, तो बहुत सारी चीजें हम देखते देखते जा रहे हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट गैस वैक्यूल्स मिलने की भी संभावना है। ओके, देयर आर चांसेस in blue green algae and purple and green sulfur bacteria you may find gas vacuoles also, which could probably be of oxygen. All right, now just like you had a quiz time in chemistry lecture, well, with the biology lecture also we have certain questions for a quiz. Let me just take it out and arrange for you. आप तब तक अपने मोबाइल में वही वाला वेबसाइट खोल लीजिए। ओके, so you need to click on, you need to log on to this website joinmyquiz.com, and you can enter this game code, और आपका नाम पूरा टाइप इन कीजिए, जैसे हमारे अविनाश कदम सर ने आपको कहा था ना कि पूरा नाम डालिएगा। करेक्ट, अविनाश तो 10 हो सकते हैं लेकिन अविनाश कदम एक ही है, राइट? तो बिल्कुल उसी तरीके से ओपन दिस वेबसाइट, पुट इन दिस गेम कोड एंड लेट मी जस्ट वेट। आप अपना नाम लिख चुके हो? 5 4 3 2 1। कैन आई स्टार्ट द क्विज? कैन आई करूं स्टार्ट? मैंने तो क्विज स्टार्ट कर लिया बच्चों। अरे बाबा, लुक एट दिस। धृति फटाफट स्पीड में, पिछले वाले टेस्ट में आप 3rd रैंक पे थे, करेक्ट? डूइंग बेटर दिस टाइम। Uh-oh, you got it wrong there. इतने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे, 70 प्लेयर्स। कूल, 71, कम ऑन। I must appreciate the way you are appearing for the test. ध्यान देके कीजिए, सब इजी था। It was a very easy test, आराम से कीजिए। आर्यन का स्कोर सबसे टॉप पे चल रहा है। प्रेशर में सॉल्व मत कीजिए, आराम से कीजिए, सोच समझ के कीजिए। ओके, आई एम नॉट इन अ हरी, आराम से, कहीं नहीं जाना मुझे। अच्छे से सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिए। What a score! So आर्यन है, धृति मोदी है, एंड देन कार्तिक पुजारी, Soham following them, Ashutosh, and then Ojas, and then we have Kanak, Mrinmay, Ria, so many people. Wow. With Aryan leading on the top.
So it seems you guys have enjoyed learning the chapter and you guys have also enjoyed appearing for the test. घाई मत कीजिए, आपको कहीं पे 30 सेकंड कहीं पे 20 सेकंड अवेलेबल है, कीजिए आराम से टेस्ट अपियर. मुझे कहीं जाने की घाई नहीं, आज संडे है. So I can see 42 people, 45 people done. और लोगों का टेस्ट बाकी है, जल्दी जल्दी कीजिए. Come on, buck up. I understand, I just said कि घाई नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, कंपटीशन में आपको टाइम भी तो मैनेज करना होगा, राइट? अरे जल्दी करो, मुझे कहीं नहीं जाना है. लेकिन कंपटीशन में आपको जीतना है. सो आर्यन बाबा जो है पहले ही टेस्ट जीत के बैठ चुके. ओके, आई कैन सी दैट. So should I end the test? करिए, आपको 30 सेकेंड और लेता हूं मैं, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, कोई बात नहीं. नाइस स्कोर आर्यन, कोई आ ही नहीं रहा है ऊपर आपको बीट करने के लिए. गुड जॉब. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू एज अ ग्रेट मेडिकल एस्पायरेंट. ओके, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, इट सीम्स दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल इन बायोलॉजी. So 71 people done. Come on, 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, there is someone coming on the top. Ravi Yadav trying to race his way ahead. Let's see. I will now have to end the test. Okay, बच्चों, very close to Aryan. So I'll just end the test now, बच्चों. All right. मुझे दिख रहा है कि कोई कोई तुम में से सोच सोच के अभी भी लिख रहा है, मतलब आंसर अटेम्प्ट कर रहा है. Well, the paper was easy. The questions were too easy. It was entirely from the PPT.
क्या काउंट है हमारे पास? 96 players. How many attempts? चले फिर एंड करते। So let's have a round of applause for Aryan, alright, जो हमारा रैंक 1 था। देखिए किसने किसने क्या क्या स्कोर किया है। आर्यन विथ ऑल करेक्ट, रवि यादव विथ ऑल करेक्ट, राइट। रेस्ट ऑफ देम किसी को एक रॉन्ग, किसी को दो रॉन्ग, वैसे भी बच्चे हैं हमारे पास। सो ऑल इन ऑल कार्तिक पुजारी डन वेल, ओके, बट देन टाइम आपने ज्यादा लिया होगा, उसके लिए यू आर समवेयर बिहाइंड। यू शुड लर्न फ्रॉम दिस कार्तिक पुजारी। अगर आप देख रहे हो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये जो तीन कैंडिडेट्स है, दिस 1 2 and 3, दीपल, आयुष एंड अफान, ये तीनों को दो दो रॉन्ग है, ओके। दो दो रॉन्ग होकर भी ये रैंक और स्कोर वाइज कार्तिक पुजारी के आगे है। वाई सो? और कार्तिक पुजारी हैज ओनली 1 रॉन्ग आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। 10 में से 1 रॉन्ग है, फिर भी रैंक में पीछे हो। यू नो व्हाई? टाइम मैनेजमेंट, ऑलराइट। इनका टाइमिंग शायद आगे रह गया आपसे, ओके। तो बच्चों, with this I would stop it here, okay, and I wish you good luck, okay, and study well। और आज जो भी मैंने नोट्स आपको दिए हैं, आपने जो लिख के लिए हैं, study that nicely and do well in your life, okay, take care, bye bye।